जर्सी नहीं याद नहीं. क्या मतलब जोगिमो की सैलरी बढ़ाई हैं? क्या मतलब जोगिमो की सैलरी बढ़ाई और किसी की नहीं बढ़ाई? तभी तो रुका हुआ है. हाँ जर्सी तो बढ़िया लग रही है इस बार. And we've seen the ceiling at the level. But yeah, exactly. We've seen their peaks. Last year, we didn't really know like how far Calm could go, how far. Jogamo could go. We didn't even know who Demon One was at the beginning of the year. So it's like I'm not sure if it's going to be that same. Do you think we've seen their peaks on this team though? Like, do you think you have enough information to kind of know where these guys Well, that's the thing, right? Potter and Jogamo and these guys are always going to be able to pull a little bit extra out. But is Don't doubt my boy Derek as well. Listen, I'm a tier 3 sub. I'm a Derek sub. I'm telling you, this guy. Listen, Sky's been nerfed. He's not even playing Sky anymore. Hope not. It's over back in the day, maybe. I mean, listen, he didn't have a good last year, but still. Superman. I mean, if it's Potter and It's what you did with Kami last year, then yeah, definitely Brings out the best. Yeah, so I mean, that's a great segue because we want to take a closer look at this new EG team and understand like what is so strong about them or why we should be excited. So let's hear from the person that knows the roster better than anybody else. It's Coach Potter. There is भाई गाना डाला इन्होंने, म्यूट करना पड़ेगा मुझे. right away is a beast. Day one trials, I told Jaw right वैसे क्या फर्क पड़ता है इस पे कॉपीराइट क्लेम आ पे जाएगा तो. IGL. He's so mechanically capable, always able to just get whatever clip he wants. He's deadly. Any and all map control they can get. No, Kimpeki, oh my goodness! You don't need Kimpeki when you have a force of nature like nature. नेटुरे Knows and loves नेटुरे. Chemo. This year he is going to be the main duelist. He's one of those players that absolutely played better on stage in front of a crowd when the stakes were कहाँ है highest and when वीसी the आजा. pressure was मैं अपने वाले वीसी में हूँ. Jorgamo getting aggressive, and oh, he's just adding bodies to the count. Jorgamo unleashing fury. अच्छा रघु ये तो बता वो कर रखूँ is gonna ऊपर have रखता हूँ to एकदम टॉप में. be the spearhead who क्या? needs to Overlay, prove discard everyone वाला. wrong and prove that he's better than रख Demon लो. One. Derek playing spoiler a little bit. On to Leaf, gets the second out to Jake too. Oh dear! Derek coming through. He's coming from 100 Thieves. He has a lot to prove पहले का रखा for हुआ था. himself. Didn't नीचे कर have दिया as था. much of a successful जब year last year. रैंक खेल रहा This था. might have been the storyline for कैम all थोड़ा छोटा कर members लो. coming into EG is ठीक तो wanting है. to prove something or another. छोटा कर Derek लो. absolutely is मुँह आ one रहा है of मेरा. those players. Superman, I'm excited as heck to have him on the squad. He is a role player to the max. Being a controller is kind of ठीक है. boring sometimes, सही है, but for सही है, fun, सही है. he makes it look good. He's maybe lost one clutch out of the hundreds and hundreds of rounds that we've played. This guy is just ice cold. Able to take care of Bang. Oh, that showstopper! My goodness, Superman! तो थोड़ा पास आके बैठोगे. क्यों? Poth's story is really cool. I've been coaching him for छोटे से दिख several रहे हो. years now, तो and क्या? he was a nobody. I'm a nobody, and he just sat there telling me I'm going all in on ठीक है. Valorant. Now all of a sudden pressure on Coach Potter, basically retracking back right into the waiting arms of A-Pop who secures the full ace. In esports, people always talk about proving yourself, hard work, all of those things. So I think it's really cool that we've put our money where our mouth is. Wow, pretty strong statements there from Potter, and it definitely, I don't know, it starts to stoke some excitement about what this team could be capable of. So let's put our expectations out here right now.
based on that, based on what we know, based on the history of these players, what do we expect from this new look EG? I mean, for me, it's still low, right? I think the floor is low for this team, and the thing is, all the hype around it is getting me kind of excited. Yeah. They don't have the reserve roster to help them out this time around, and I think that's going to really hurt them when they have to really prove a lot. Right, exactly, because you saw the peaks of EG last year were really drilled through these executes of having that reserve roster here. Their fracture was one of the best in the world. बोलना वेलकम सुन रहा हूँ मैं. At this map, and it was so well drilled. The utility, the ult combos, it was all there. It made them a real fearful opponent when they were playing on this map. They don't have that reserve roster that we've already mentioned. They were running drills. They said that. They were a key part of victory. When they went up onto that stage and won the championship, they were saying, listen, our reserve team was just as much of deserving of this title as the rest of us that actually played this, because they were a key part in them actually being developed as players. Now, they don't have that this time. Potter's still a fantastic coach. We know that. She's proven in that capacity, and these players definitely have that potential. So I don't think we should set the floor really at the very bottom. Sure. Who knows with this team? Listen, I think they're going to be contenders maybe for the middle of the pack. वेलकम आएगा तो ड्रैग कर दियो. It's going to be a tough ask when they don't have a समुराई वैली इसको वो दे दियो. रोल. Yeah, it's a fair point, right? It's not a narrative दे रहे हैं तो. much at all, having that sister team, that extra दे team दियो. to sort of be screwing and playing against. But they'll have no shortage of opponents here at the VCT Americas. Speaking of which, let's move on to their opponents and send it back over to Wyatt. He's managed to wrangle out there somewhere G2's Leaf. हेलो. Hold on, आ रही let me stop you there for a second. I have a बढ़िया बढ़िया. philosophically deep, controversial even question for you. Why should people buy the G2 skin set? It has the best player card and the best colors. That's all. It's just that simple. Thank you, Leaf. You know what? Okay. Instead of appealing to financial hardship, तो टच पे देख रहा है ना तो सेम टाइमिंग के लिए. नहीं मैं YouTube पे देख रहा हूँ. Twitch पे वो आ रही है, ऐड आ रही है. और ऐड अलाउड नहीं है ना इसमें. नहीं ऐड यही लोग करते हैं ना, वही वाले ऐड्स है ना. नहीं Twitch के VCT वाले बजाज चेतक की ऐड रखेंगे. हाँ बजाज चेतक के ऐड आ रही है. हाँ नहीं भाई. Hey webcam हिलाना है ना वहाँ से. Yeah, I love this match as a setting stone for G2 coming into the league because they got challenged by what was वो कहाँ है? वो नहीं कर रहा. एक और को तो मिली थी, नाम भूल गया उसका. NG2 हाँ वो नहीं कर रहा. अभी कर रहा है कि नहीं पता नहीं है. To the level that G2 is going to bring. They got tested really in their adaptability. That's like Valen calling his game, and over the course of that series, you could really see it shift and mold to the way that crew are playing. They used 2 timeouts in the first 7 rounds on Sunset. ठीक है वो भी कैमरा पास करूँ. The crew play as a team. A lot of Yeah. 4-1, ऐसा ही है, 2-4, perfect है. lurking, a lot of contact play, heavy stuff relating to that. And Valen and his team, they weren't really. मुझे cam change करना है. That's why they were on the back foot straight away with that. Frame elements का They है. did bring it back. They did get the win. And yeah, crew are no slouches, even though they went 0-9. They went on that LCQ run. They've got that firepower there. And they shut them down. That's why it felt like that they weren't winning at any point in turn. Because Kesnet dropped like 31 kills on one map. And the rest of them are just like all even spread. Like they're not winning in terms of the individuals, like one player popping off. It took team play, fundamentals, and good calling to get them over the finish line. Right, and this could be a match considered a great example of great calling and adaptations. And so we had a chat with Valen after this game, specifically about his calling and how it had to evolve. So let's Yo, hello G2, how are you? I'm good, Ray. Finally, after a long time, I can stream. I think EG जीतेगी. Just because we have a long core EG नहीं है G2. मतलब EG I want G2 to win though. G2 over है. innovate as a team and try to be different or else you're going to fall behind, right? So Over वाला तो है नहीं ना. the one thing that kept us growing is just our mindset together and honestly our time spent building relationships with each other. Anytime I ask someone about Valen, IGLing is the first thing that comes up. For some reason, this guy stands head and shoulders above the rest. Quickly, why? मैं भूल ही गया था. इसके लिए मुझे दूसरा स्क्रीन ही खोल देना चाहिए था क्या? किसके लिए? Let me watch party के लिए. Let me make a new हाँ बना ले. scenes हाँ. हाँ बना ले, 1 सेकंड लगेगा. अरे रुक जा मैं वो करके करता हूँ. क्योंकि सर मेरा हिल जाएगी नहीं जगह. देख ले. webcam की तरह ही है. Yeah, especially when you have to contend, like we said, with these individual moments of, Kesnet. And yes,
don't get me wrong, Jonah P had some real highlights as well, but it's not on the same level as an individual like His Pisnet. timings are disgusting, Yeah, by the way. the guy's like ripping off heads, getting 2Ks, 3Ks almost every other round, and when you're up against that, you can sometimes just get knocked in terms of your confidence. Your team can feel like you're not winning any fights, and it has to be the calling, it has to be playing together to pick yourself up. It has to be the IGL. Navigating the ship through some like tumultuous tides, right? And Valen is that guy. I've spoken to him. He's incredibly eloquent. He's very, very intelligent for his age as well. He's got a great mature head on his shoulders, and it definitely shows, I think, in terms of चैट में तो बैठा है. ट्रेन में हो. कहाँ पे पहुंचा क्लोज? कितना दूर है? ट्रेन लेट है क्या? G2 though, will their style work better We shall against see. EG तो to मैं that जा benefit हूँ. against Crew Take as they good care. kind of ठीक है struggle G2. and had to Bye bye. adapt Good night. Thank you so much for joining I in. think the only way to settle this is a good old-fashioned introduction. debate. That's right, it's time for Decision 2020. That's probably an American reference, Decision 2020. I don't know. Bala, yeah? Okay, good. Bala and Ben, God help me. Ben and Bren are going to debate. They're going to argue. They're going to have a bit of a chin wag, a bit of a gas bag. And we want chat to weigh in on who they thought was a more compelling debater. So spam EG or G2 in the chat. Because the question is, will G2's style work better today and allow them to get the win? We're going to start with you. What's your position? No, I don't think that EG style or G2 style will work against EG here because I think EG is something of an unknown quantity, and when you think of the quantity that they have coming into this, it is Paul. It is somebody who's very adaptable. It is somebody who can really bring out and ब्रेन से ऐसे कंट्रोल नहीं हो रही. doing on the other side. So when you look at G2 and the way they played against Crew, yes, they were kind of giving up a lot of space. हंस ले भाई हंस ले. And I think all that space that they have to do and have to give up. मेरा webcam बगैर बताना. ज़्यादा छोटा हो गया क्या? 5 seconds. I don't think that's the case. If you guys can. रघु बता देगा. रघु देख लिया एक बार. एक सेकंड भाई खोल रहा हूँ. That was your buzzer? Oh, I thought everybody was disagreeing with me. I was like really insecure for a sec. The 20 seconds. 20 seconds. You're still putting pressure on me, man. I'm getting stressed. ठीक है थोड़ा नीचे कर लो. G2. ठीक है? Should be matching up a lot better नीचे कर लो against नीचे कर लो. I don't think नीचे किया थोड़ा. the fact is they don't have Kiss. EG don't have Kiss. You're running a buzzer again. I still got time. और जो लोगोस है ना ये लेफ्ट साइड में कर लो. इधर. स्क्रीन के एक्सट्रीम लेफ्ट में. हाँ. देखो इसका देखता हूँ मैं. कहाँ डाला इसे? या मैं तो बॉटम लेफ्ट में कर लो या ऊपर कर लो टॉप पे. तो लोगो डाला है क्या? कौन सा? कहाँ डाला है? CS वाला. CS में भेजा ही नहीं है. ओवरले नहीं है तेरे पास? भेजा ही नहीं किसी ने. देखो अभी भेजा. अबे तू मेरा डिस्कॉर्ड फ्रेंड नहीं है? छी बे. बेशर्म. तो मेरे DMs तो ओपन है. भेजा देखो. मीडिया कैप्चर करके लूप डाल देना. ठीक. ये बगल वाला तो जाना पहचाना लग रहा है. क्या? जिसके लेफ्ट में बैठा है. अबे ये तो वो है ना. अबे राइट इसके राइट में जो बैठा है वो उसके जैसा लग रहा है बे. बोले है नहीं बट उसके जैसा जो इथोस वगैरह के साथ कंटेंट बनाता था ना EG में. नहीं ध्यान. नहीं इथोस एनर्जी में था. EG में था. एनर्जी में था ना. एनर्जी में था. यस. हाँ तो एनर्जी में ये कौन था जो कंटेंट बनाता था साथ में? लड़की थी ना कोई? नहीं बंदा. बंदा ध्यान नहीं यार. बंदे ध्यान नहीं रखता मैं. ये हेलो. अरे इथोस की बात नहीं कर रहा हूँ. इथोस के साथ में वो थोड़ा ऐसा ही एशियन बंदा जो इसके जैसा दिखता है. बहुत सिमिलर दिखता है. ब्रो पॉटर की हाइट क्या बढ़िया है ब्रो. हाँ पॉटर की हाइट डैम. हाँ. अरे बाय द वे बस. हाँ. हेलो बोलो भाई. किसको? पे बंदा है. हेलो ब्रो. कौन है? कोच आया सर. कोच है मतलब. और कौन? मिस्टर आउटप्लेस. ओह अलर्ट प्ले भाई. होटल है तो लंबी बे. 6 फुट प्लस है आई थिंक. शूट करेगी साथ में. एक्सक्यूज मी. बाजू में हाइट नापने के लिए. अच्छा. ओ भाई डिस्कशन चालू हो गया बे उल्टा सीधा. Icebox. मुझे देखना है कि लाइक पॉटर विदाउट डीमन 1 कैसे करती है. क्या करती है? जोजेमो है ना उसमें. तो जोगेमो.
G2 pick attack. Dogemo. डॉग कोई बात है एक्सक्यूज मी क्या हाल है? लैंग्वेज ब्रो हेलो कॉन्टेंट व्हाट्स अप? G2 ban Breeze. आउटप्लेस भाई का जीपीयू जाने नहीं दे रहा है। कोई ना, आउटप्लेस भाई स्किन पे इतना खर्चा करोगे G2 ban Ascent. तो Decider जीपीयू map तो is रुकेगा ही ना। बाप रे क्या बोलते हो भाई? टॉक्सिक भाई टॉक्सिक क्यों हो रहा है टॉक्सिक ऐ सच बोल रहा हूँ भाई। हम गरीब का कलेक्शन देखा है। अरे पर तब तो उसके पास था ना जीपीयू अभी तो खराब हुआ है उसे क्या पता था खराब हो थोड़ी जाएगा ना, वो उसने कभी लिया ही नहीं। उसने हैं? प्रोसेसर अच्छा लिया, हाँ उसने जीपीयू कभी अच्छा लिया ही नहीं। ओह दैट इडियट वाज पर्सनल। ले यार वो जीपीयू। हाँ हाँ भाई टेक डीएल करने लग गया भाई ये तो दो चार चीजें डाल देते हैं गाइस। स्टूडियो मोड में जाके गाइस लाइट हो गया यार। हेलो रुशिल कहाँ से हो मैं दिल्ली से ब्रो हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम इस कंटेंट वाले मेंबरशिप कैंसिल कर दी यार। HyperX से मैच देखा आज, इससे बढ़िया था जीपीयू लगा लेते। सही बोल रहा है वेलकम। स्किन्स बकवास चीज है, चीज पे पैसा खर्चा हुआ है। One player that'll be surprising for a lot of fans is Nature on EG. I think he has. हाँ वो भाई देखा अपना मैंने डिस्कॉर्ड वाला थोड़ा छोटा कर लो। This year, क्यों चलता है परफेक्ट है बे थोड़ा सा छोटा कर लो, थोड़ा छोटा, थोड़ा बड़ा, बोल रहा है? ज्यादा बड़ा लग रहा है वो। how they play. बस किसको बोल करो रहा है? उसको। Comparing one to one, like each player, my team and their team, we're individually better. There's still a 3 versus 3. ADS2, Jonah P. In the moment here, a doubled up. It is some semblance of awareness. Jonah P. Still there. And there it is. You know, just winning rounds and getting kills, getting an ace, like, and having the crowd cheering feels amazing. And look forward to, you know, just reliving this experience for the rest of the year. भाई इजी जीतेगी 100%। अब तो देखना है मुझे कि पोर्टल लाइक व्हाट डज पोर्टल डू। एक सेकंड यार इस पे फट कर दो। सेकंड स्क्रीन वॉच करते हैं। लेट्स गो G2। बस भाई चैट चल रहा है आपका? क्यों क्या हुआ करी मैंने उससे बात कर ली अच्छा तो कब पहले लिखा उसने बटन वर्ल्ड चैंपियन कैसे बोल दिया भाई एक टाइम था जोना पी और डायमंड प्लेइंग ऑन अब बस पास ड्यूल मटा बाकी है, वो भी कर देगा पेपर एक्सिक्यूशन। नहीं एक स्मोक क्या आप अलोन है एक्सक्यूज मी कर रहा है ना क्या अलोन तू भाई अपने होमीज को अलोन नहीं छोड़ता मैं। मेरे दो होमी बैठे हैं आगे आने दो भाई इस टाइम में अच्छे चलेगा पता है डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि साए ऑइल ने उनका खुद का बैनर बनाया ना, गन्स नहीं बैनर। तो भाई G2 के एडिटर को तो रेस बनता है भाई। G2 का बैनर देखा है ना? अरे देख इन्होंने ना बहुत सारे बैनर बनाए होते हैं तो कुछ जो पास हुए होते हैं ना उनमें से इन्हें सिलेक्ट करना होता है। यहाँ कुछ पास ही नहीं हुए इनके ऐसा कुछ। मैंने कहीं तो देखा है, जोनस ने भी वीडियो में बोला है कि बैनर जो है अगर आप अलोन है तो अलोन ही है। और बैनर्स बनाए तो टॉक्सिक होने की क्या जरूरत है? ऑइल ने अपने बैनर्स बना के सबमिट किए हैं। मैंने क्या बिगाड़ा है? उनको सिलेक्ट एक्टिंग को ड्रैग करियो रघु उसको एक्टिंग बैठो रघु छी भाई गंदा भाई आलसी इंसान। टॉक्सिक रखा है मैंने देखा नहीं।
अभी hashtag toxic देख के रिपोर्ट करता हूँ। भाई मुझे अभी भी सेंटिनल्स के लिए बुरा लग रहा है। रिपोर्ट करूँगा। उनका जो ओरिजिनल डिजाइन था वो रिजेक्ट हो गया। पढ़ा नहीं मैंने आज तक hashtag नहीं पढ़ा। उसके बाद Yeah, big test indeed. I mean, listen, in Valorant, है what we G2 see का so far in America is there's बहुत amazing sexy amounts of parity between all the teams. Anyone can really win on a given day, is what it feels like. तुम जा And इस साइड sometimes that से individual elite shines through for some of the teams, and it will grant them that win. Now, for EG, I think one of the benefits they've got coming into this is that a lot of अभी मैं these शायद players रखा are on a होगा। roster where generally I think the expectation should be set quite low. एक टाइम पे मेरा टाइटल जो गेम में टाइटल होता ना वो था मेरा टॉक्सिक। World beaters. A lot of people question why they were even the seed to begin with. The roster wasn't even intact, and it's Yes, just come on. Pokemon Potter basically remaining. तो वो But I think these players can come into this as a fresh यार start. 20 लाइक तो कर ही लेते Even गाइस। Derek was saying at points, he's tweeting saying he realizes more than anyone he probably didn't deserve to have a second chance in tier 1, but they've got that chance now, and it's about grasping it at the right time, right moment. It's right here and चलो now. गाइस पोल डाला है, पोल में आंसर दे दो फटाक से। Well, any of these teams right now at this point, मुझे लगता है And I think it's important too, because last year फर्स्ट राउंड रश होगा। that, right? You start a whole split basically, and that's the amount that they had to work through, and that's how long it took for them to क्या लगता है? get to anywhere fruitful. Now it's फॉर्म ये बताओ देख लो सबसे यार अच्छा पहले। कैप्सूल किसका लगा तुम्हें? strong. रश होगा फर्स्ट राउंड 100%। Straight away, a Cypher locked क्या in बोल रहा है वेलकम? there, probably no surprises. सबसे अच्छा कैप्सूल किसका लगा? Bringing क्रू। the Lumen out. मेरा Out of the ordinary so far, gents. सपने तो है, Controller बस भाई के is सपने तो है, but that's what Superman मानना feels, पड़ेगा। and he's been great in the past on that role. It's just about finding his footing, finding his comfort zone. And I think they've actually put together a team that should do that for him, right? He's playing with former teammates in Derek. He's playing on a team I think that should तो ये सारी है be welcoming for him. आगे रिश्ता आ गई ना। really curious as to what they've got cooked up. They're going to be playing something जिस तरह से नेचर ने पीछे देखा है ना, ये इन्होंने पक्का कुछ कुक किया है। Yeah, if there's going to be anything unusual, one of the big indicators I think as well that the team hasn't had a lot of time is the initiator picks, but Nature's going over to the breach. Might be some, when I see डेरेक teams को start वापस देख के moving अच्छा into लगा certain टू बी comps, I ऑनेस्ट। think it shows that there's some एक massive लौता है time into because of the scout है। changes coming in so recently. और उसके ओल्ड टीममेट्स ही है थोड़े बहुत। So that's what I really pay attention to a lot of time, and you see those comps getting outvalued, but I'm seeing a fade on व्हाट डू यू थिंक? मैच एमवीपी कौन बनेगा फर्स्ट गेम? भाई ऑब्वियसली भाई I'm liking what I'm seeing कौन? so far. मेरे बिना मैच चल सकता है क्या यार? We haven't seen this team play. जल्दी जल्दी बोलो क्या लगता है? बस बस्टर आई थिंक। But I do have another advantage. अबे which is बेस्ट actually शर्म। seeing one of the इधर players इधर। in G2. They इधर ही बोल रहा हूँ। play on this map versus crew. They should know what the पहुंचो तो weaknesses भाई। are in G2's play. And when they played against crew, पहुंचो ना, G2 उसके बाद really मैं ही struggled सबसे पहले against बस का Hello, Atlas. पोस्टर लेके खड़ा रहेगा। straight up mid, up the gut in Sunset. 59 RR हो गया। Leader on that map. Despite the fact that G2 did come back and win it in the end. Yeah, I mean, G2 were giving up mid voluntarily to some degree, right? They spread across the sites and could just cut noise entirely. They had no idea where they were going to be coming from. मतलब That led to Kessner getting some fantastic. 2 गेम और हमारा आरआर सेम होगा। It was a very interesting. हेलो You're right. They saw the VOD, or they saw the. खेलना पड़ेगा मुझे। They know how to adjust the cipher chips, for example, and I think when you think about खेलना the पड़ेगा। it's really interesting because there's a new team. They aren't set in. सुबह उठ के सोलो क्यों? Right, game's arena, you ready to सुबह उठ के सोलो क्यों करो सिंगापुर? फुल डुलिश। मतलब हम साथ में क्यों कर सकते हैं हम? रघु रघु सुनना स्ट्रीम पे वेबकैम ये वाला कोई या दूसरा? चुपके से सोलो क्यों करूंगा पता भी नहीं दो चलेगा। मॉनिटर है ना? मेरे आपको जो पसंद है रखना है यार। हाँ? भाई आवाज 59 बहुत कम आ रही है। सही में 59 आ रहा है। ये जो करंटली है बिना ओवरले के, ये रखो भाई। सैल्यूट है। ओवरले नहीं, ओवरले के बिना ही रखने सैल्यूट है जिसने कैरी करा है। मैं ओ शिट ये नहीं बोलना था। की बात कर रहा हूँ। ये नहीं बोलना था। कौन बैठा है? नेट बैठा है क्या वो? एक्सक्यूज मी? ये देख मेरे को साइड वाला ही ठीक था। साइड वाला? G2 का। Evil Geniuses in their first match of Kickoff with an opportunity to silence the new kids on the block. Remember G2 joining the fun as the 2023 Ascent. साइफर मिड पुश करके बॉटम आ गया गाइस। Early comp on Sunset. You've got that Viper wall splitting the site in half. Deep dart already cleared out. Not much else going on for EG so far. Now they have information about fade. In this matchup right now is EG मिड वर्क नहीं कर रहे हैं लोग, इन्फो नहीं है इन पे। recycling utility. भाई टीट्स को देखते हो क्या? नहीं। Looks like APOS gonna get. ये सब लोग अपनी अपनी टीम का लेके खेल रहे हैं। I mean, instantly right on cue, that fault line out from Classic. Nature to challenge that fight, set his teammate up. I don't need carry bro, I need good teammate। क्या बात है? That's already a factor in the situation. Immortal 3 करूंगा भाई आउटप्लस। Understanding that they baited out the breach stun, they can go for the hit.
नेक्स्ट लीडर बोर्ड देखना मिलूंगा भाई। मैं इस एक्टिव हो जाएगा तेरा, बढ़िया खेल रहा है तू, बस वही टीममेट की दिक्कत रहती है, समझ रहा हूँ मैं। जैसे कायरा के साथ हो रहा है अभी, कायरा भी पहुंची है ना डायमंड से, सीधे 59 आ रहा। from EG, and that causes the mid push here. 30 seconds left. B's completely open, Doug. They should know that that's a case here too. You see the drone clearing out the trip. They start to wake their way out onto the site. The spike planted, and you already see भाई वो साइफर को पकड़ने के लिए कैसे बैठे दोनों? that could be coming. You've got Apoc who's sitting just on the other side of the spawn. Two members for G2 concerned and ready. Got a trip to deal with as well. The Haunt's gonna come up over the top. टाइम ओ And now EG is just sort of creeping their way out onto the भाई site. टाइम Catches the में timing perfectly. As Leaf gets another one. I don't know how you get away with kills like that when you're stunned. इसी जब Either way, numbers advantage in बीच मैंने जब स्ट्रीम करना छोड़ा 4v3 is the पहुंच गई। डायरेक्ट डायरेक्ट ने 100 थी उसकी लगा रखी है। तेरा स्ट्रीम करते हुए लैग होता है ना, आई थिंक वही रीज़न है कि। और एक मैंने सोवा वाली गेम देखी थी 013 भाई, स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल नहीं लिया की था ना पहले भाई। आउटप्लेस एक बार मेरी डिस्क्रिप्शन में स्पेक्स देख ले फिर बता। expecting that flank and they read it. मतलब वो दिखाया पहला प्यार दिखाया डायरेक्ट अपना। They baited out a lot of utility and then decided where they wanted to strike. But look at this, Doug. This is looking like a trap play on the B main. Omen flash breach. भाई बिल्कुल भी मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, और वॉलपेपर लगाऊंगा वो वाला This yesterday. वॉलपेपर लगाऊंगा और ट्वीट करूंगा। Set it just right. They've got the nade that's going to push it as well. Jogmo does get a little bit of damage done, finds some value. Nature still playing भाई here. सही नहीं है, स्पेक्स सही नहीं है। 13 HP and balance sitting on 48 HP. I mean, the setup बस is भाई brutal हाँ। to deal with. टूटना कब बंद कर गया? मैंने गलती से फोन पे आपकी चैट स्ट्रीम खुली हुई थी। क्या करा मैंने? Drone out, assume men has to take a नहीं side वही step back. कोई भी आके तोड़ के चले जाता है। भाई मैंने एक नया वॉलपेपर लगाया है 13-0 वाला, ओ 013 वाला। This is G2. They don't want to lose any more guns into this round. पता नहीं है किसी का। Fade and spawn. Bomb's going down right now. Wasn't even a double face. I thought there'd be a little help over the top. What? Garrett did some damage. Wow. Jonah They get avoids two? disaster. And that's a W round right here from EG. वेरी नाइस इको। Four guns out? Yeah. Beautiful. Vandal save from Jonah. जो भी है बस भाई P though. थंबनेल सेक्सी तो हाँ भाई। रघु भाई ने बनाया, रघु भाई ने बनाया भाई। Coming in from ऑल क्रेडिट गोस टू रघु भाई। थैंक्स ब्रो। सेक्सी लौंडा भाई विद द सूट ट्वीट आई है। opting to just go straight. गाइस यहाँ से ना अब हम एनालिटिक्स करते हैं गेम में क्या हो रहा है, ठीक है? चलो हाँ यहाँ से देखते हैं आप, ठीक है? अब बाय राउंड है, फर्स्ट बाय राउंड। Bandits to save what could have been a rough start to things, all things considered. Back into the action. You see no ults really online anytime soon. You mentioned बैलेंस्ड यार क्या बोलूँ मैं, light armor for everyone on the side of G2 here. And this काफी लो एंड है, पता है? बैलेंस लग रहा है पर लो एंड है एकदम। they've got bulldogs, they've got vandals. Really the whole way. Very dangerous round. Is EG aware? That is the देखो उन्हें पता है उनका बोनस है, पूरी इन्फॉर्मेशन पे खेल रहे हैं, देख रहे हो? there's just one Vandal on the board. देख रहे हो कि नहीं? For G2. कुछ बोनस नहीं है। कुछ बोनस नहीं है बोनस खेल कौन रहा है भाई। बोनस खेल कैसे सकते हो जब भाई। लास्ट राउंड 4 मर गए थे। ये देख रहा था तुम लोगों का अवेयरनेस है कि नहीं, रहने दो बस भाई क्यों तुम लोगों का अवेयरनेस देख रहा था। मतलब बोल रहे तो कुछ भी बोल दोगे। तुम लोगों का अवेयरनेस देख रहा था आराम से, टॉक्सिक सही बात। टॉक्सिक नहीं। हमने कुछ बोला क्या? This हमने could be कुछ huge बोला ही into this round. Re-aggro coming here from EG. यार थोड़ा सा देखा था मैंने, एक्चुअली मैं कुछ और कर रहा था बैकग्राउंड पे, सेटअप वगैरह ही कर रहा था ये सब स्ट्रीम का, नहीं देखा मैंने, थोड़ा सा देखा था बीच में जब चैट वैट कर रहा था खाली। Showstopper invested, clearing every little angle he can. सुनते ही सब No बग गए resistance भाई। to be found. And the spike is still not out. It's still just now making its way over to the site. 4v4 है गाइस, We're gonna want to take this fight. अल्ट भी नहीं है कुछ क्योंकि तीसरा राउंड है। देख रहे हो अवेयरनेस, देख रहे हो तुम? The dart on the other side of the smoke as it dissipates. The swing comes out from Jogamo. Balance there to greet him. Leaf joining in. ओके लीव ठीक है। नेड और फ्लैश बचा रखा है उन लोगों ने। जस्ट लकी मैन। A miracle. Ned and Leaf both weak. So it's not out of the realm. ओके विनेबल है। Saves it. G2 with a massive 3-round lead early on. आई मस्ट से लकी हुए हैं लीव के जो किल्स निकले सिटी पे। एक तो निकलना ही था क्योंकि वो ऑफ एंगल उसको अच्छा सेट करके गया था भाई वो। एक मारा पहले वो। हाँ उसके जो बाद का एक और, जो मारा था हाँ ट्रेड गलत हो गया। This game so far. And you know, there was a नटूरे ले नहीं पाया, ट्रेड नहीं ले पाया नटूरे। comfortable. Is he going to be slotting into this roster
बीच बीच में फोन पे चैट This feels much more like the Leaf we saw last year. भाई And you know what is so dangerous about this G2 roster is I feel like they didn't have Trent online. They didn't have Leaf online for their last match. भाई काफी रिएक्शन पे खेल रही है G2 स्टार्टिंग के राउंड से ही। Kesnet, who was going absolutely Super Saiyan mode on them. So if these guys play even half of how they normally play, कल कैसा मजा आया it's लास्ट gonna be की a very hard game. Hmm? Uphill battle for कुछ नहीं, अभी ये गेम मैं बाकी बातें कर रहा हूँ बैठ के। 3 rounds high. क्या लगता है स्कोर प्रेडिक्ट गाइस एवरीबॉडी? Side, it's just pistols. They don't have nearly as much firepower on the other side. of this. फर्स्ट मैप का है टोटल फर्स्ट आजा फर्स्ट मैप on these eco rounds. They're really trying not to get ecoed. It's 13-0 G2. 13-8 G2 G2 जीतेगी नो फकिंग हाँ। वे इजी जीतेगी। जीतेगी। ईजी का क्या स्कोर तो बताओ। इजी स्कोर ऐसे नहीं बता सकता पर इजी जीतेगी। मतलब मैं आसपास तो बोलो भाई बेस्ट आराम। आसपास तो ब्लाइंड भाई है भाई। आसपास तो ब्लाइंड भाई है भाई। इसने Not able to convert on the third. A little bit of damage has been done though financially. वेट व्हाट क्यों निकल रहा उठा क्यों है वो वीके जैसा खेल रहा है। See a clean snap out from Trent to get things to a 1v2. आराम से भाई वीक होता तो एस होता अभी। सामने वाले का वालों का। सामने वाले का अरे ब्रीच तो भाई देखा है बस भाई अब तो नहीं। नहीं एक्सक्यूज मी ब्लाइंड भाई लग रहे हैं मुझे तो तोड़ लो भाई ब्लाइंड ब्लाइंड है नहीं तो तोड़ दो। Again, the discipline that they play so well together, and again, I want to go back to the conversation we were having with Valen last week about how they have to grind through some of this भाई stuff. And इतना सनसेट इतना बढ़िया मैप है ना मतलब इतना फंडामेंटल वाला मैप है ना ये मतलब क्या बोलूं मैं लोटस जैसा एकदम मतलब तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर है ना तो ही तुम ये मैप में कुछ कर सकते हो वर्क अराउंड। तो इस मैप पे हाँ इस मैप पे सेट प्लेस चलते ही नहीं है। कल C9 ने इतने सेट प्लेस करने की ट्राई करी हर राउंड पिटे हैं वो लोग। 3 बार तो ईगो हो गए थे वो लोग। वो तो अलग बात है। जिस मैप में मिड नहीं है ना उसमें यही होता है बे मतलब मिड इन द सेंस देख ना मिड हाँ पीछे से लेना पड़ेगा। मतलब ये जैसे एसेंट मैप हो गया मतलब इसमें फंडामेंटल्स हैं अभी काफी मतलब तुम्हारा स्ट्रांग है। मिड से तुम हर जगह स्प्लिट हो सकते हैं यहाँ हाँ हाँ वही 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 डिफेंडर स्पॉन ही है वही वही यही चीज माइंड पे भी होती है। माइंड पे टीपी फास्ट होता है। एसेंट बोल रहा है तुम तो माइंड भी क्योंकि सेट प्लेस मेरे को समझा नहीं भाई क्या कर रही है ईजी अभी। लिटरली उन्होंने क्या बोलूं मैं उन्होंने मिड वर्क करा तो उन्होंने बी मेन का इन्फो लेने की ट्राई ही नहीं करी। coming in as well on contact just to seal the deal. Fade all invested here. I don't know if I agree with this, Doug. yeah, it's not going to tag वो anyone क्या either. अल्ट थी अरे तेरे मेरे फंडामेंटल्स थे। That has been laid. Derek looking for any target तू to find the dart. लाइन पे खेलते हुए देखूंगा मैं No ult होपफुली on the side of G2 to have to worry about here. जस्ट सेइंग। They're going to have to get through the defenses that are posted up back in. And so far they've done just that unless Jonah P can be the hero once more. Derek's gotten it to half and that's all it's going to be. Jonah P with 3, Jonah G2 gets a 5. Wow. And Jonah P not missing a beat. मैप ब्रोकन है मैप ब्रोकन नहीं है यार ये क्या बोलूं मैं मतलब काफी रिएक्शन वाला मैप है ये। जैसे लोटस है रिएक्शन पे खेल सकते हैं इस मैप पे ज़्यादा मतलब वही तुम्हारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि सेट प्लेस तो कोई भी टीम कर लेगी। अगर मैं अभी एसेंडेंट लॉबी वाली टीम को बोलूँ ना ये करो मॉली डालो वो करो वो सेट प्लेस में ले लेंगे साइट वो कोई दिक्कत नहीं है। पर जहाँ मतलब इंडिविजुअल स्किल सेट लगता है फंडामेंटल तो वही बोल रहा हूँ मैं उसके लिए भी डिपेंड करता है पूरा ऐसे मैप्स में रिएक्शन वगैरह ज़्यादा। And I agree with this pause. It's perfect timing. Maybe a little bit of nerves throughout the team. Yeah. First match on LAN. And you're down, what, 0-5? Yeah. नो डाउट सेट प्लेस भी काम करते हैं बट कितने राउंड कर लोगे प्लेस वही सेट प्लेस 2 राउंड करना है। कितने राउंड कर लोगे भाई कितने राउंड कर लोगे काउंटर है तुरंत तुरंत सीधे काउंटर बनाते हैं भाई। ओह तूने देखे इसके एक्सक्यूज मी शूज देखे इसके अच्छा अच्छा आराम से भाई प्लीज। अबे उस पे शायद वो बना हुआ था कौन है वो Their whole game
प्रोटैगनिस्ट कौन है ब्लू लॉक का? ईगोइस्ट इसागी। इसागी जो भी नाम है उसका। एक तरीके से खेलना होता है। हाँ भाई ये भाई देखना वीके कितने यार आपसे कितने मतलब आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप कितने इसका इसी इन्फॉर्मेशन का खेल नाम रही है भूल अभी। जाओगे। जो अभी G2 अरे खेल रही है मतलब इतना इसागी इन्फॉर्मेशन पता था खेल मुझे, रही बट है। उसको ईगोइस्ट बोलते हैं ना ज्यादा, इसलिए। मतलब रिएक्शन खेल रही है G2। अच्छा। ये डिफॉल्ट दूसरा डिफॉल्ट चालू हुआ है इनका। हर टीम के मल्टीपल डिफॉल्ट्स होते हैं, इनका उनमें से एक डिफॉल्ट है बी मेन वर्क वाला। भाई एक दो ही देखे हुए हैं और उन्हीं की बात करता हूँ। और कुछ होना चाहिए भाई लाइफ में जो भाई आपको ये मोटिवेटेड रखे। स्टैक उसमें जा रहे हैं। वो देख सीधे स्पाइक वाला धोती उठा के भागा पीछे देख। जैसी भी पुश हुआ वो देख कहाँ पहुंच गया स्पाइक लगा। उन्हें पता जैसा था कि ओ देख ये रहे, पता चल गया। उन्होंने खत्म कभी केज नहीं फेंका, खत्म। इस बार केज फेंका, देखा तूने? हाँ ना और देख तीन बंदे मिड आ गए। वाह आउट प्लेस हाई बोल रहा है एक्सटिंग। Usually the Razers are the entries, but Yeah, they're the ones on site. this is unpredictable right here. And the trip is going to give things away. और देख पीछे पकड़ लेगा, रेस पकड़ लेगा। But Leaf should get a gorgeous timing on this. And I wonder if G2 is doing this on purpose. They want him to hunt for these kills because he's already close to another showstopper. Yeah, you're right. He's only 3 points away. He might not get the opportunity though. It might end up being Ned who's going to have to deal with the three-man pressure waiting on the other side of this wall. There's the trip. The first falls the flash in the face. Doesn't matter as he gets the second. तुम्हें पता है ना कि बाकी सबने सीटी रोटेशन करी और सिर्फ साइपर क्यों फाइट करने आया? पता है कि नहीं? बस बता दो। नहीं पता? मैं देखा नहीं अल्ट है कि नहीं उसकी कितनी। हाँ जस्ट अल्ट यूज करी थी उसने इसी राउंड पे, इसलिए उसने सोचा फार्म कर लेता हूँ आपसे। वैसे ही को था सामने वालों का स्ट्रिंगर्स ही होगी मैक्स टू मैक्स। बट भाई मैं हूँ वो जगह में भाई फुल अंधे में भी पड़ जाता हूँ भाई मैं। वीके ईजी का आइडियल कौन है? नेचर नेचर ना I don't know how he gets away with that. नटूरे। 6 rounds in a row for G2. An opportunity perhaps for Evil Geniuses to stifle some of that. अबे अगर पीछे रह लेते ना, साथ चले जाते तो भी ज्यादा फायदा होता, क्योंकि वो नेचर की देख अल्ट में एक और भी चाहिए। Dude, this wall just counters any early eye here. Yeah. 13 के चांसेस कम हो गए ना। They are going to fight this. अरे चुप जा भाई। And getting the first kill, but G2 instantly responds. अब जिंक्स हो गया, हार गए राउंड। Nature has to take a step G2 आ रहा है ना। You got Superman who's joined commits the ult. Remember, he's the one who has the op. As Nature's trying to dance around blind and deaf and not able to hear a thing, having to deal with the nade at his feet, and then having to deal with Leaf 2. Not gonna connect. ओह भाई सुपरमैन है भाई। सुपरमैन ब्रो। अरे बाप रे। Somehow stays alive, but असली even सुपरमैन through केप के those साथ आते हुए। heroics, EG find themselves भाई साहब। outgunned yet again. केप है भाई असली सुपरमैन। और क्या? केप लगा के घूम रहा है भाई। Even the players out. He gets punished for it. Jonah P never going to miss those shots. बस भाई पता जान तुझे स्पोर्ट नहीं बता रहे। इजी को नया पहला वो मिल गया ना बाय, वो गलत हुआ इनके लिए। अच्छा पहली हार जाते थे। नहीं अबे नहीं भाई मिलना ही था ना। चैंपियन है ना भाई। तो ना मिले नहीं। आई एग्री मिलना था, बट वो चीज इनके अगेंस्ट हो गई क्योंकि चैंपियंस थी इनकी ऑर्ग, बट टीम पूरी चेंज हो गई। तो अब ये डायरेक्ट हाई प्रेशर वाला गेम खेल रहे हैं काइंड ऑफ, समझ रहे हो? खेल नहीं पाए ये। पर ये भी तो सोच फिर पहली बार हो जाता है। ये भी तो सोच पहले बाहर नहीं होते, डाउन उसमें जाते लोअर ब्रैकेट में जाते, बट अभी फिर बाहर हो जाते हैं। इस चीज का फायदा भी हुआ कि भाई उस टीम के अगेंस्ट एंटी स्ट्रैट वगैरह कर सकते हो आप, बट स्टिल ये टीम थोड़ी ऐसी है ना, जैसे ये बहुत हाँ ये बहुत, और ये कौन है? हाँ वो 3 का ही है वो। ओए जोन पे तेरा वाला बड़ी था भी क्या? भाई मैं C9 के मैनेजर के साथ खेला था परसों, कोई दिक्कत नहीं जॉनी के साथ। वो 100 थी, उसकी स्किन के बारे में बकवास कर रहा था बस पूरे गेम, और बीच बीच में ज़ैपा और आ रहा था उसके उसमें माइक में। अरे कहाँ बैठे हैं वो? कहाँ बैठे हैं? हेलो? बॉक्स के ऊपर बैठा है। एक्सक्यूज मी? पे बैठा है। एक्सक्यूज मी?
confused. Where'd that shot come from? अबाउट प्लेस ऐसे ही करेगा, देखियो ऑफ लेके यहाँ चढ़ जाएगा, देखियो मैं बता रहा हूँ, उसने देख लिया स्ट्रीम पे ये करने वाला है। अभी देख, अभी जाऊंगा ना स्पाइक रश में, एक वहीं पे मिलेगा मुझे। अभी ऐसा ब्रो तुम मारने के बाद फिर ओमन डेड ऐसे नहीं, जब वो ऑफ से मार रहा था तुमने नोटिस नहीं करा ओमन की हाइट लंबी हो गई थी, या पंजे पे चढ़ के ऑफ कर रहा था वो। ठीक है। बस भाई ये सब आप ही नोटिस करते हो। बस गेम ही अलग लगता है आपको रिलेटेबल लग रहा है ये सब। ये आवाज किसकी है ये? कहाँ पे? कोई तो आया। कहाँ है? ये ट्रिक क्या है भाई? Just net and Jonah P on their own. Jonah P with ult, but really not in a position to do anything with it. 3 HP as he's been battered. क्या इजी को पहला राउंड मिलेगा? यस बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा भाई। भाई उन लोगों ने जस्ट बिकॉज़ कि ये उनको पहला राउंड ना मिले हाँ। आंसर दी थी भाई फाइट इट आउट। आउट प्लेस की बात मुझे पसंद आई, वो बोलता है मैं खुद के प्लेस बनाता हूँ। 7-1 never forget। अच्छी बात है। ओमन डैडी फॉर अ रीजन ब्रो। लोग देख एंगल, वीके भी ऐसी बात करता है, कभी तुम देखना इसको कॉल पे बात करते हुए ना, लोग देख एंगल ऐसी बात करता है। भाई वीके की कॉल सुन के लगता है ये बंदा हमारे साथ खेलता था और रेज करता था। क्यों अब मैं काम हो गया हूँ ऐसा बोल रहा है? नहीं बस अब तो काफी बदलाव आ गए। बहुत काम हो गया अब तो तेरा। भाई मेरे को कोई स्कैम करने की कोशिश कर रहा है तो भाई, ऐसे आपका काम ही हो ट्विच के चुका है। डीएम में, ट्विच के डीएम में उसको रिवर्स स्कैम कर दो क्या? क्या हो रहा है? स्कैम करने की कोशिश कर रहा है कोई, ट्विच उसमें मैसेज करते हैं ना डीएम। हाँ कर ले, बात कर ले तो। करो भाई करो। क्या करूं सोच रहा हूँ। स्कैम क्या कर रहा है वो तो बताओ। आवाज किसकी आवाज कम आ रही है? बता दो मैसेज। डिस्कॉर्ड वालों की आवाज कम आ मैसेज रही है। किया है, थैंक यू फॉर वाचिंग वीसीटी और बंडल अवेट्स, और फिर एक फिशिंग लिंक। तू अपना लिंक भेज दे। दिस अकाउंट इज नो लॉन्गर एक्टिव, बैन भी हो गया अभी अभी में वो। हां वहां Meanwhile, again on the other side of the map, the pit has been invested, the spike has been planted. Nature does have a भाई मुझे तो चाइनीज लड़कियों के मैसेज आते हैं ट्विच में। भाई आराम से प्लीज, आराम से, पूरा मन नहीं बताना कि रिस्पॉन्ड भी कर देता हूँ। अरे क्यों क्यों कर रहे हो, क्यों 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 खोल रहे हो फोन? सॉरी भाई सॉरी। और भाई सबको मत बताया गया, फिर बोलेगा आने बंद हो गए। हेलो कार्नेज। ओह नो, कर दिया, इनफ कर दिया। नो वे नो वे नो वे, अबे छोड़ा क्यों? उसकी मर्जी भाई। आधा तो कर देना चाहिए। टाइम नहीं था, मतलब वो 1 सेकंड और केस हट गया था। हां लेकिन ओह नो, ओह नो 13-0 रह गया, शिट। अरे वो एक चीज डाली थी उसने, लोथार ने डाली थी, पता नहीं किसने डाली थी ट्विटर पे, कि आप केज फेंकते हुए डिफ्यूज चालू कर सकते हो जिससे केज हटेगा नहीं पूरा होने पर भी। एक ट्रिक है। हाँ अच्छा तो मैं तुझे लिंक भेजूं? नहीं वो अलाउड है इसमें, वो है वीसीटी में अलाउड है वो। हाँ अलाउड है, वीसीटी में अलाउड है वो, कुछ ऐसा कुछ नहीं है वो। एक भाई बस भाई कल ये लोग डब्बा दिखा रहे थे, आज इन्होंने ट्रायंगल बना दिया वीसीटी अमेरिकास वाला। है देखा नहीं मैंने। वो अलग गेम के अलग उसमें दिखा, ईएमईए में डब्बा था। नहीं इसी में डब्बा था, अमेरिकास में ही था। ये देख मैं तुझे तेरे सर्वर में डाल रहा हूँ जनरल में, बस देखना। दो टाइम आउट यूज होगा जैसे ही। देख बस टाइम आउट चल रहा है वो, देख क्लिप जाके। पॉटर रियली मिसिंग डीमन वन राइट नाउ। आई थिंक ईथन को ज्यादा मिस कर रहे हो तो। भाई ट्विटर मत खुलवाया कर भाई ऑन स्ट्रीम प्लीज। वही मैं अभी खुल गया था फटाक से। Guys, you can do a full diffuse with a Cypher cage if you do this. Put the cage next to the spike. When you're in range of diffusing the spike, you use a double bind. वो सेम and I उस पे put it on ओ left सेम control, इक्विप का use ही है ना, object and use you it. exactly So I'm looking 7.8 at the seconds। cage Yes. on my left control. Exactly and 7.8 click 7.9 seconds। both of those actions. The cage activates at the same time, and now I can fully stick the diffuse with the Cypher cage.
Guys, you can do a full diffuse with a अगर इसने मेरे पोस्ट में कॉपीराइट मारा मैं तो म्यूट करके देखा भाई। नहीं मारेगा, टेंशन मत। ऐसे ही तो जीतना था इन राउंड। 10 times in scrims and it has never failed. इसलिए नहीं खेलता मैं। मतलब एक राउंड जीत गया हाय बर्बाद हो जाता, फिर अगले राउंड ये हो जाए आपके साथ। Yeah, that feels spamming at that point, you know? Yeah, that feels bad. Rubbing dirt on the wound. भाई मुझे उस ओमन में क्लोरो दिख रहा है, पता नहीं क्यों, जज लेके और खेल रहा हूँ। सोना भाई से एक ही चीज काम करेगी, जज बाय करना मेरे को, इसलिए अच्छा खुद मर के रिफ्यूज करना। वो बाइंड वाला भाई। भाई अनदर इको राउंड। ओ भाई Nice. And if I'm EG right now, every round matters. It doesn't matter if you're getting blown out. You need to win as many as you can just to have something. सुपरमैन ये जो बेबी वे नहीं है कास्ट है इसका, लास्ट टीम जो था वो बेबी वे के साथ ही थी उसकी। अच्छा हाँ, 1 साल बाद खेल रहा है सुपरमैन। फेज में था ना ये लास्ट। हाँ भाई मैं इतनी देर से माइक बंद करके बोले जा रहा हूँ। क्या प्रिजन में था वो? क्या था? फेज क्लैप। आउटप्लेस बोला सुपरमैन को ईमेल कर दिया, अब कमबैक होगा। लेट्स गो। अच्छा अपने आपके खुद के सेल्फ मेड प्लेस भेजेगा। ओ भाई ए ट्विच वाले फैन बैठो ना भाई, उन्हें क्या ही बोलूं भाई, उन्हें पता चल गया भाई कि मिड वर्क कर रहे हैं, पकड़ो इन्हें। तुम लोग ट्विच पे क्यों नहीं देख रहे? हाँ डायरेक्ट चेतक की बजाज चेतक की ऐड आ जाएगी ना, वो भी इलेक्ट्रिक। मेरे तो नहीं आ रही ऐड, VCT अमेरिका पे नहीं आती ऐड। आ रही थी भाई हमारे तो आ रही है वो भाई। सिर्फ गेम के बीच में नहीं आती, वो सिर्फ उसमें आती है लॉबी में जब ना? ऐड होता है एक्चुअली उसके अराउंड ही होती है, क्योंकि उनके तो अच्छा गाइडलाइंस। हाँ मुझे लगा ऐसा बोलो ना, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चला दे। हाँ या फिर ये क्लच करिए ना पीना। इफ यू आर फीलिंग जनरेशन ऑफ टर्बो खोलो साथ में भाई। ठीक है भाई कुछ सुनो कुछ नहीं वीके भाई टर्बो दिला दो यार गाइस, आराम से कुछ एड्स नहीं आएंगे प्लीज। कुछ सीखने के लिए देखो गाइस, मस्ती मत करो ठीक है, आराम से देखो ठीक है। भाई मैं क्या करूंगा सीख के, मुझे कौन सा प्रो जाना है? देख के हम सीख जाते हैं ना। एक तो भाई मैं सब कुछ किया 3 साल से, एम ही नहीं होता भाई। अबे सच बताओ, ये तो मेरी लाइन है। अब ये भी लिख लेगा। तो मतलब आउटप्लेस बोल रहा है, पॉटर की जगह आउटप्लेस को रखना चाहिए था, समझ रहा हूँ भाई। मैं कलीजिएट इवेंट खेला था एक, तेरे को बताया था ना, हमने यूनिवर्सिटी की तरफ से खेला था। और भाई हम फुल टीम, हमारे लीग स्टेज था बेसिकली, 6 टीम थी, 5 मैच खेलने थे हमें हर टीम के अगेंस्ट। एक भी मैच हम फुल टीम नहीं खेले, 2 लोग तो मिनिमम आते ही नहीं थे कभी। और एक मैच खेल रहे हैं हम एक गोल्ड 2 के साथ, एक मैच खेल रहे हैं हम एक सिल्वर के साथ, फिर भी जीत गए 2। भाई सिल्वर तो मारते ही हैं। एक टीम थी जो 13-1 कर गई थी हमें, वो एक्चुअली प्रोफेशनल प्लेयर्स थे। डॉग एमो नाइस, वेल प्लेड। वेट व्हाट, मस्त खेला भाई। बहुत अच्छा हाफ नहीं था डॉग एमो compared to how they started. Him getting into that smoke, Right. you think about it, if he gets popped by Leaf at the very beginning, he doesn't get those 3 kills. It's an entirely different situation. It does not sound like we're going to get to look at that one more time. We're actually going to throw it down to Sideshow, who's hanging out at the top. Very much more, Something. Thank you मेरी very आत्मा much. गई Yeah, this half was kind of defined by a bit of a comeback towards the end there from EG, but also a lot of mistakes at the beginning. So I want to break this one down. It's the round 3/4, and we're अबे taking a यार look from ये EG's हमें हंसी नहीं लगती इसको देख चुप हो जा, मत कर। the beginning rounds, whether it was due to nerves or whether अरे ये वो लगता है भाई, वो मैडी भाई कौन है भाई? अरे वो सोनिक वाला वो जो है रोबोटनिक, डॉक्टर रोबोटनिक। trying to get a seize on line. Not anticipating the pace of हाँ। GT. Let's move on
onto Dr. round 5. Eggman. Again, rifles online. This is insanely important this round. It has so much momentum in the series. If you've seen तू what बता दे, happened मुझे नहीं just लगता there, था, मैं the फोटो trip डाल got रहा हूँ, all देख of ले them. And जनरल again, में। यार अब this is लग from रहा है EG's यार perspective. They can't see all of the mini-map. देख ले So जनरल में the फोटो best डाल is दी to मैंने। place them बताने से back पहले तक and नहीं take लग a रहा look था, अब over लग towards रहा है। mid. And the protocol is really, really भाई चुपचाप स्ट्रीम देख लो, बकचोदी मत करो। हाँ ना यार एक बार देख तो ले जनरल बस, वैसे देख किक कर दूंगा बता दे दोनों ये को। नहीं लग रहा था। चुप हो जा, किक कर दूंगा। way too Motivational many people जरूरी in था। their face there. कोच ही बन This is जाओ। the legal round that they tried. आई थिंक यू शुड ट्राई कोच बनने का। चुप चुप भाई, वीके किक कर दूंगा, सीधे बता रहा हूँ। कोई बात नहीं वीके भाई, हम दोनों साथ में देख लेंगे। वॉच पार्टी करने है, पिकनिक करनी नहीं है, चुप हो जा। At the start of this game that were leading to multiple moments where they gave away cheap kills to G2 at the start of rounds. The more that they can tighten that up, the more that they can actually work on making sure that the gaps aren't given away right at the start, they'll have better approaches in these rounds and they'll be able to go toe-to-toe with them. You already saw that towards the end of the half where they were able to pick up, 4 rounds apart from where Superman gets a ridiculous kill with the operator earlier on. So that's my focus coming into the next is those early round fights. I'll send you back over to Doug and Baby. भाई कल वो जो उसका मैच था HyperX और T1 वाला, क्या मैच था भाई वो? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है भाई। इससे बढ़िया चालू होता खत्म। डबल कंट्रोलर था ना। एनालाइज तो वीके भी बढ़िया करता है, पर वाइपर वुमेन मुश्किल होता है थोड़ा एनालाइज का काम ना। बहुत इंसेन मैच। मेरे को जेंजी वाला देखना था यार, मेरे को पूरा बिलीव था जेंजी में और वो जीत गए। बहुत सही के चुप रखेगा मुंह। नो ऐसे मत बोल भाई, मेरे भाई फ्लैशबैक। चुप हो जा भाई। And it does look like it. थोड़ा एमोइकास देख ले। They're second guessing themselves. Now's the timing they need to take. और गाइस फनाटिक के बारे में क्या विचार है? अबे लोग कसम से किक कर दूंगा भाई, लगातार उसको एनालाइज करने दे। EG saw or felt a red, but there's enough hesitation and enough doubt to where they could be very well missing this window they had. So slow. Derek purposely showing his position in mid to keep people there. कितना बढ़िया खेला, इन्फॉर्मेशन पूरा बेट आउट करा It It looks like it's going to be a post plant versus Nice. retake, 5v5. How much value can Derek get in this mid flank? Okay. That much. A 2K. Nice. Couldn't ask for more. Yeah, answering the question at just the right time. He's being surrounded, a bit overwhelmed. Just Trent cleans him up. And he did good damage. Wait, Max what? sitting at 55 HP, Trent armor gone. One shot headshot range for anybody with a ghost. काफी डैमेज दे दिया। तो एक तो ही कर लेना मेरे चैनल पे वॉच पार्टी। ऐसा रिएक्शन दे रहा है। ऐसे ही नहीं बोल रहा। आप कुछ बोल नहीं रहे, किसी को तो बोलना पड़ेगा। मैं तो रिएक्शन दे रहा हूँ। Time is of the essence. It's not on his side. He's going to have to make move if he wants to pull this thing off. Dancing around the fault line. ये मेरे साथ ही होता है, मैं ऐसे पोजीशन खेलूंगा फिर स्मोक देने लग जाऊंगा कहीं और। We got a game on our hands, Doug. They're keeping it close, man. Again, 4 of the last 5 to close out the half. The pistol, all of a sudden, that भाई फिर राउंड के बाद जब हार जाते हैं लगता है ना कि स्मोक क्यों दिया। distant memory. Nice shots from Derek heating up. कभी कभार कांटेक्ट पे खेल लेना चाहिए, हमेशा स्मोक की जरूरत नहीं होती, ये कह रहा हूँ बस मैं। हमें तो पता है। वो सड़ी के पूछ रहा कौन है, चुप रहेगा। मैं रघु को बता रहा हूँ, तेरे को नहीं बता। अरे तो अलग वीसी ले जाके बता देना भाई। For aggression from G2. We had our fair share of 50s yesterday. I don't know what it is with teams and just stacking early B on their anti-ecos on this defense side. वो देख डिफॉल्ट। अब G2 को इको जीतता है। नहीं जीतेगी। सीधे स्पाइक लेके भागेगा। इको जीत गई तो मैं G2 का बदला ले रहा हूँ। जैसे कुछ भी कांटेक्ट जो भी ट्रिप फायर टूटते भागेंगे ये लोग, भागेगा। नहीं भाग रहा। बच गए पैसे बच गए। भूल गया पैसे बच गए। This is not the player you want warming up against you. No. अबे यार ये। The last couple of rounds he's had a flawless round for EG. Okay. Okay, Superman. कर What's दिया। he up to now? 17 and 10. Yeah. यार खेले भाई ये लोग। I mean, to be fair, they are just eco kills, right? Like he's supposed to win those gunfights. Sure. But the momentum that gives you as a player, man, like if I'm getting those 3 kills, I'm feeling good going into every single round after this. Yeah, 1000%. And I can take over at that point, so.
ओमेन की आउटफिट के ऊपर चड्डी पहन रखी होती तब होता असली सुपरमैन. What is the plan here? A heavy stack towards B. I mean, everyone is here. Look, very slow play. First 2 rounds now. EG going for the B pop on this bonus round. मेरे को VCT कैसे दिलाना है EG wins. अच्छा. Fastest round they've had so far. ठीक है. That early smoke to sway some of the early aggression. Leaf there to clean up A-Pop. You've got the dart back sight to confirm that players are out. But they're really hasty with this. There's the bucket. Not able to find anything. Leaf keeps him back. Giacomo and Superman were enough to be handled. And now Derek's left alone. Run onto the Guardian. Leaf and Valen both weak. Derek. I don't know if they're going to be weak enough though. There's still so much for Derek to deal with. He's got the spike in hand and again the discipline out from G2, not giving him any ones. Not swinging out recklessly. And this is Trent just literally yelling in comms. I'm behind. Just wait. Ash Ali gonna देख. Can Derek find anything else? Look at this discipline. It's so impressive. Not an inch being and that's exactly the right play. सही करा उसने क्या ही करता था. Fundamentals. That's what G2 was talking about. So Valen was saying in his interview. Just because we are a core for such a long time, लगता है एक बंदे का म्यूट करना ही पड़ेगा. Fundamentals doesn't mean that we're going to shy away from finding new ones. सर्वर म्यूट कर दिया उसको. I honestly like the aggression from EG. Oh, 1,000%. But the utility was just not there in time. Or it wasn't correct. I saw a breach flash come out, but by that time, Superman and Jaw were already dead. It's too little too late. Boring streamer है. चुप हो जा साले. Opting to take fast elbow control satchels. ही बंदा था जो entertain कर रहा था उसको भी कर दिया. And you're right, a little bit pacey that way. But 4 people तो पहले stream volume increase. Volume stream didn't get the first trip from Ned either, so that's something they're going to have to deal with. The drone re-clearing elbow. It's going to be a little bit of confidence for Trent to at least throw a little shoulder. I like that G2 isn't scared to take the space after the utility, even though they're aware that EG could be behind it. Hiding. And there's the Omen flash. Oh, and they're going to swing out behind it. They're going to catch him. Yeah, Superman's done. Very nicely timed. The one problem is they had no control across the middle of the map. So Apoth is in their spawn. Apoth was serious lurk timing, but there's no way they know. They can't know. Oh my gosh, there's a world. Can Leaf and Jonah P do it? They're so separated right now. And there's really no way for Jonah P to get out. He's left on an island. Reinforcements are as far away as they could possibly be. But as the time ticks away, reinforcements get closer and closer to arriving. Unaware of where he could be, he finds value onto the first, waiting for the launch onto a second, and it's clean. Derek in a clutch situation. They don't know where he is. The element of surprise on his side. Jonah P is going to get cleaned up. Fatal online. 13 seconds left. The spike's not in hand. He's going to have to get onto this. He's going to have to do it quickly. And Derek does. The Red Bull clutch for EG. And that is all off of Apoth, taking that mid control, as you said. Let's go. भाई Derek ही बोल दिया. चुप होएगा. Derek closing out the round. Why destroyed? And what looked like disaster for EG, they end up bringing it back. That pre-fire from Jonah P is sick, but Derek just closing out the clutch. And all momentum has been shifted. I heard something there. It was a cold response too. You got to remember, I mean, Derek made his name on clutch moments just like that. And it was something that, quite frankly, was lacking the last time we saw him on the stage. So it's good to see him get back into those big moments and be able to execute on them. Still find themselves. भाई ये लोग फास्ट करने लग गए ने फील आ गई कि अब थोड़ा फास्ट लेना चाहिए अपने को. वो देख मिड वर्क मिड देख 4 बंदे मिड भाग रहे हैं क्या? Apoth is dead. Very smart from G2 to fully clear flank. Shenanigans up mid again. That's a pretty fast adaptation to be Monster भी ये They करता still है. haven't committed to the plant. Wow. It's still in hand. Leaf is causing just enough delay with the ult. Ultimately, it was Valen who cleans it up, but they find the value they're looking for as the spike sits harmlessly on the site. Superman cannot convert. Leaf with 3 and G2 get to 10. That was a very heads-up play from G2. Clearing out Apoth in mid. They don't want to deal with that mid shenanigan. And then going for the fast retake this time with Rocket. Almost. And Leaf
having a great performance right now. क्यों बैठा है मिड पे? I think you No, see बड़ा cam का है इसका. how much chaos and how much pressure Leaf was able to apply. Bro 100 kills की क्लास है यार, तुमने ढंग से नहीं देखा. स्नेक बड़ी है. He could not commit. Joggo could not commit to getting the spike down. It bought just enough time for them to flood out, as you were just mentioning. Now EG with a less than stellar buy to work with. One off a breach ult though, and it looks like they will be picking this up maybe as the hit is coming through after the breach util. लेंगे पूरा लेंगे. Breach ult for the post plant. Free sight again in the airplane Bucky in full effect. Remember, he's tried this already. Previously was the Superman TPing forward with him. This time does not have that भाई वो दिखेगा नहीं. side net. Patient with it. The Bucky once again goes down with a whimper. They invest the Rolling Thunder. Wow. They're gonna push into this. Look at how far up Apop is. The Stinger's great. Nature gets involved with his own utility, upgrades the weapon and punishes a third. But Trent on the counter. Nature now left alone. Nothing but a classic in hand. 1v2. Fuck. But the spike planted 20 HP. Only a classic. Yeah. Went over him. He's gonna find the timing. Oh my gosh. Can Nature get away with it? Bucky ले ली. But the knife is out, and that's the wrong weapon there. Unreal. What a recovery from G2 because of the likes of Trent getting 2 through smoke. अरे. And what a great push गन for में बुलेट्स नहीं थी यार, उसको रिलोड नहीं करना था. क्लासिक थी. हाँ क्लासिक इसके पास नहीं थी. नहीं इसके पास नहीं थी. नुबड़े नहीं थी. वही तो बोल रहे हैं वो लोग. I saw Apop's positioning. He was so far up. The swing was great. And honestly, man, those are, as you know, those are decisions that you make on the fly. Yep. That's not a set piece. That's not something you drill. That's, all right, we're pushing, go now. classic. And it worked out great. I like seeing that from a rookie in the league as well. Yeah, me too. Apop being default करने लग गया था but वापस. actually just run through, no fear, and create plays like that. याद रखियो 13-8 बोला था मैंने. G2 with a 4-round lead. They have 4 ults to work with. Now you've got an aggressive hit B main right at the beginning. नहीं हुआ तो क्या है? दोनों Doesn't seem like EG wanted to deal with that whatsoever. Oh, he's going fast. Fast 3 clear this time. Dogma's there to keep I'm going. out. Investing the ult. Might get a kill on Superman. It does. How does he find Superman? वो देख bombard कर रहा है वो देख. Say, but they've drawn out the Roomba. They've drawn out the nade. And for now, that's what they're gonna have to settle with. भाई ज़्यादा नहीं होगा. Once again, he's been a menace. बोला ज़्यादा हो How गया. far up he is. कहीं भी भेज दे भाई ये लोग. Is that gonna be Reactive again. Derek, patient Nice. with it. The first, not able to convert onto the ठीक है second. smoke is down ना. Shot goes just a bit wide. उस दिन पर रह गई यार अब. Possibility. और देख धप्पा भाई धप्पा हो गया था उसका. His late lurk. He does get one. That's 3 on the round for him. That's a huge. भाई वो उसी को मार्क कर रहा है अभी देखना उसको नेट को. कहाँ मार्क कर रहा है वो? Position allowed on Sunset, where members are just scattered across the map. भाई ये वाइपर की फट गई ना बी में. असली बात वो है. He knew it was और ए inevitable. वाले की भी फट गई. कि भाई पीछे से भी आ सकता है तो एक को पीछे जाना पड़ा. दो तो होंगे ही नहीं ये पता There's है. been a lot of talk about Nature and the potential that he has. निकल सकता है स्टन है. Big moment here. स्टन है Can स्टन he है. pull this thing off? अरे 1v2, he's got a भाई. fault line to play with 25 armor. वापस नेचर. No other utility to his name. नटूर What है. he does have Mushkil है though is the थोड़ा. benefit of time. अभी stun है He's उसके been पास. away for a few moments now. वो देख स्टन लगाएगा सीधे दोनों को. He knows now, Doug. अभी एक और बार मार No, that's got to be enough for G2 to go aggressive with the net. Is at least going to get half the spam drops. There's the fault line on the swing, but Trent went a little bit aggressive. He's going to stick it. Oh my gosh! भाई तुम मेरे से आगे क्यों हो? मैं भी तो यूट्यूब पे हूँ. 2x करो भाई. तो रियल टाइम 2x कर. 2x करना पड़ेगा लग रहा है. That was so close to the defuse. Nice one. भाई निकाल लिया उसने. चलो 13-8 हो रहा है अब To तो जब. spam the first guy. And I think again. कौन है? भाई वो आ गया. दोनों के Discord पे. कौन आ गया? Discord पे वो आ गया. नहीं मैं बोल रहा था बस तेरे को पता है उसको क्या बोलते थे तुम? मुद्रिक. He didn't. Trent didn't have a good hand. And it makes you think. First guy that got on the bomb, he could have diffused from safety, but he Yeah, didn't. भाई वो potentially, yeah. स्मोक कितना बढ़िया है. फ्लैश नहीं होंगे वो. Dogmo continuing to Flash cause the wall. problems. चुप हो जा. It's gonna be huge. And nade. Those two may be in trouble. Oh. Leaf tucking takes a little bit of damage. भाई He's actually getting away with a lot here. I don't know that they वो देख invested साइपर को in देख. Nine. साइपर को देख सीटी भाग रहा है. सीटी भाग रहा है. देख देख देख. on to Jonah P. Leaf. They're gonna know. Oh, they don't know. It looked Rat भाई. You're right. Now Net and Leaf left to try Rat to pick up the behavior. pieces as Leaf was surrounded. Now Net on his own, just the sheriff.
snap Oof. onto Derek is clean. Sheesh. That's the first step of many to go, though. एक तो मेरी तरफ शरीफ चला रहा है तो Apoth has touched their spawn, I think. Every single round. Like every round that he hasn't died early. अरे मॉन्स्टर की तरफ चला है Three शरीफ on the ने round from him. You imagine a time rat है भाई ये। because hey, रैट नहीं है वो, मिड पे केज डाल के पूरा भागा है वो धोती उठा के भाई, तूने देखा नहीं है? मिड पे उन्होंने ट्रिप नहीं लगा रहे क्या वो लोग एक बार भी? नहीं लगी थी शायद, तोड़ के भागा। नहीं नहीं ये राउंड नहीं थी, ये राउंड नहीं थी। Against the breach comp. वो हर राउंड जा रहा है ना मिड। The breach util, fade util is just too strong compared with that raise when he's taking early space. oh, it's smothering. डायरेक्ट को उन्होंने दे, हाँ मतलब ठीक है। Limits the places that you can play. जॉगिंग हो गया। आपको क्या बोल रहा है? वो क्या बोल रहा है कि नेट्स एकदम स्लोएस्ट बेस्ट लेके मैं सबसे फास्ट लेक दिखाता हूं तुम लोग को तो। भाई अभी जॉगिंग करने अभी खोला नहीं है अपना, जॉ नहीं खोला है, खोलना जो से। और क्या? जब एक बार भौंकेगा ना भाई चालू हो जाए ना बस वो। I'm telling his team, I'm like, listen, what worked was हाँ भाई securing mid. ठीक है, सुपर चैट किधर है? हेलो सुपर चैट किधर है? हेलो सेकंड में आपकी बात हो रही थी। कैनेडियन डॉलर्स किधर है? बात सुपर चैट बोल के अरे कैनेडियन डॉलर्स दो भाई। Did it great on the eco round. Yeah, they did. गरीब हो भाई। Close game. From what seemed like it was gonna be Can relate bro, can relate. G2. Yeah, bro, that 7-0 start is a distant memory. हाँ ना। So insane. भाई अभी जॉर्जिया में आएगा ना, जॉगे में। What are the adjustments on the other side of this timeout? G2 still have a lead, but it feels like they've been white knuckling their way through these last couple of rounds, just trying to hang on as desperately as they can to close this map out. I think they need to play more off these trips. उन्होंने ले लिया है पर वो क्लोज आउट नहीं कर पाएंगे, I think मुझे लग रहा है G2। Take on the actual site. Don't die early. Don't try to fight for that A space because you've been losing the fight almost every single अल्ट हो रही है? time. कहाँ जा रहा है ये? सचल लेके। Jogmo's already gotten high ground. Their early flash Wow. and the satchel across are going to find a little bit of space elbow. Love this spot from Valen. A nice passive angle here. You सिर्फ can easily cheese the kill. सिर्फ ए पे वर्क कर रहे हैं लोग, प्रेजेंस दे रहे हैं अपनी। बी पुश आएगा तो पकड़ने की ट्राई करेंगे, देख देख। तो एक बार देख G2 की कितनी फटी हुई है लर्क से इस बारी। अरे और वो देख, हाँ हाँ, अरे वो भाई वो खुले सांड की तरह दौड़ के आया लास्ट राउंड। 4 बंदे, मैं तो वहीं देखूं, उसको पकड़ूं पहले। There was a slight pause, but EG दोनों now ट्रिप pushing में their way out onto the site. तो इस बार देखना कहां Smart reaction दोनों ट्रिप from में E. कैमरा ही लगा दिया भाई के लिए तो। They're so patient with this. Nature's going to have the Rolling Thunder online, which is going to be massive in the post plant now. पूरा Val clear not करेंगे able to अब। find a kill, a little bit of spam through the smoke. Has to give the position up. Oh, no way. This is perfect. अब वो That's going to push them all back. ब्रीचर मार दी भाई। नहीं 3 गए। थैंक यू वर्ष भाई फॉर सब्सक्राइबिंग यार। Flood over the side as Jogma भाई ये gets to. ऐसे छुप भी सकते हैं लेफ्ट साइड में, मुझे नहीं पता था। ऊपर मैंने खेला ही नहीं इतना मैप ये। Himself, and it's not going to be enough. What a post भाई plan. मैंने गलती से आगे कर दिया। And like you said, यप। बंदा स्पॉन बैठा हुआ था क्योंकि उसको रीड हो गई थी। to go down, making G2 have to push through these site smokes that Superman is putting up while he's on top of that default box. भाई वीके ट्रैप भी लगा दिया, कैमरा भी लगा था। नहीं Great ट्रिप दोनों reaction एक and play from EG right अच्छा। now. ये छोड़ दिया Understanding that G2 pushed B वो main. कपड़े लेने Okay, we जाना can है take भाई A नीचे space से। now. If Yeah. anyone's there, laundry there'll कर be one लिया guy मैंने max, 20 right? दिन 1 or बाद। 2 people max. Right. Nobody's there. We know it's retake. Let's set up. भाई ये तो है 20 दिन चलाने के लिए कपड़े दिखाएंगे। Another light buy for G2. You see the Hi. financial implications of how these last couple of rounds have gone. That's a nice way to Stun say is that. So brutal. It stuns all of lane and जब 20 elbow. दिन लगे तो सारे Look कपड़े at खत्म this. करने के लिए तो भाई Just waiting for the अभी camera सारे to नहीं get है, close. सारे नहीं किए, जो पहनता हूँ वो। G2 can actually see the corner without being seen by the camera though. भाई Let's वो see if स्टन Apoth रेडी is aware है। here. साइफर के कांटेक्ट पे स्टन रेडी है, देख Stun देख is देख। still out. हाँ एक हिडन Will इन्फो he भी ask देता हूँ for एक it? तुझे। Stun will not be coming out anymore. उसमें सिर्फ एक ही जीन्स है। Meanwhile, there's a dog that just went out market, catching onto the first. मैं पहन। And that's the off angle I was talking about. You're absolutely right. क्या I mean, कर just रहे हैं Stopper भाई? online ओ now. The setup has भाई। been cooking ले for ले a long G2 time. There's लीप so ने many लीप people वाला there. नाइफ लगा रखा Does है he ये। get away with the second? How on earth has Leaf done that? नाइस नटूरे। Nature with an Oh excellent my response. god। Another timing through अरे mid. And this is यार। a huge gap that EG has been abusing. I mean, they've been making this area of the map No their own. way. The Dink onto net. They just don't have the guns to respond.
This mid area is just what? It's crazy. They've made it their own. Nice Can shot, man. Valen pull this off? Does he have an ability to upgrade a weapon? Just has a stinger here. Does not seem to be interested in any other. The paranoia. What a flash. It's gonna hit both. What a flash. He's gonna find them both. He gets Just like the her. first. He has to switch weapons. Right click, not connecting. Buying some time, nothing but 3 bullets. Tries to grab the weapon and it's just out of reach. Derek with a अबे massive गन round उठा and we're लेता tied at 11. पीछे बड़ी Closes it out. आगे ही बड़ी नहीं अरे वो तो अरे Like I said, the reactions Side from में कह रहा था। EG are just clinical. They know that they're not holding mid. They're finding all these timings, even with this early first blood from Lee. मुझे गन पता नहीं क्या And दिखा what मेरे seemed साइड like पे a misclick from Fa- अच्छा from गन गिरी Side. उधर वो भाई सैड डायरेक्ट ने बचाया भाई राउंड I'm cool with him like that. I'm cool with him like that. Yeah. Pulled out his flash on accident. Yeah. He did not mean to do भाई that. नेचर ने जो पता है क्या सीन है पता है वीके में बताता हूँ पीटा है मैं- नेचर ने लीफ को सुन अगर मैं होता ना क्या उसकी लोर जगह है सुन तो ले हाँ मैं होता ना मैंने फ्लैश करता पीछे जाके गन उठाता पहले क्योंकि आवाज ही नहीं आती गन स्विच हुई है समझ रहे नहीं बे अबे की जगह आ गया और था क्या? वो, ठीक है कुछ भी और कह क्या? रहा है भाई वो जो- स्टिंगर लेके क्लोज रेंज में मुंह पे चढ़ गया एक बंदे ठीक को मारने था। के बाद 1v1 है वो ठीक था पर ठीक था और ऑप्शंस बता रहा हूँ कि अगर फ्लैश करके पीछे नहीं गन भाई उठा वो लेता नहीं सुन ना वो जब वो राइट क्लिक कूद के राइट क्लिक कर रहा था ना हाँ तो रिलोड करके कूद रहा होता ना वो लेफ्ट राइट खेल सकता था नहीं reload हो नहीं जाती नहीं है और अगर वो रिलोड होके कूदता रहता तो तब हेडशॉट डेरिक को पड़ती थी मारना भी मुश्किल था यार उनके पास वो नहीं था ना खुद सोच उनके पास उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है उसके पास 150 Confidence एचपी थी भाई जिसकी डेरिक की हम्म। ये भी नहीं कि एक थोड़ी बहुत कम हो आई थिंक तो टीपी कॉन्फिडेंटली मार सके टीपी नहीं था उस पर टीपी नहीं था आई थिंक टीपी नहीं था कुछ यूटिल नहीं थी फ्लैश था खाली मैं आता हूँ And look at the scoreboard for the side of EG. Everyone equal. What was once the Superman उसी show, पे he चल got जाता one kill फ्लैश में कैसे पता चलता कोई भी पता नहीं चलता on the bonus round. The anti-eco. Frags by committee for Evil Geniuses. They find themselves tied up after the disastrous start. मिड स्मोक डाल दिया भाई They're पहले in a fight now. Derek has his ult. Apop does वापस से too. मिड छोड़ दिए वो लोग I think what you're gonna see here is trying to set up APOP to get a lurk अपन kill. समझ गया भाई वो वाला कैम Again, गलत था भाई get that Cypher ult down. दूसरा कैम डाला फुल डिफॉल्ट खेल रहे हैं भाई And then hit a site together as a unit. This breach comp's so good at that. I am baby So good at setting different players up for kills. कौन है Off the fault lines, off the flashes. समीर भैया और भाई समीर Derek भाई has an ult in this B split. वेलकम बैक I mean, he can be a bully if the utility is used well. And you don't even have to invest the stun. I know, but the setup was there, right? The dog, if it latches, there's a swing, there's the fault line. It's so oppressive. भाई पूरा They B1 invest the Nightfall. It doesn't tag on to anyone, though. अरे क्योंकि एक इन्फो तो ले ली उन्होंने 3 बंदे इन्फो आ गई उनको सीधे भागे भी वही That देखा aided था ना his कि feet. खेल रहा है बी में Leaves him worse for wear. 58 HP, no armor left. Really important here for EG to maintain this market control. And This really, is so oppressive. and really important here for G2 to win this round. They don't have a ton of money. स्मोक मांग रहा है शायद They've kind of got to convert here. Great Nice. utility from G2. Derek, the first to fall. There's a paranoia coming out from Superman. Joge as he Mo tries to checker steal left. up Net, who has not moved in. कर ले भाई check दूसरी बार पे टायर For से his patience. खत्म G2 just wiped the floor with EG there. Apos left alone. क्या कर रहा And you know he's on a flank somewhere. That's going to give him enough confidence to triple face, hold the defuse. ये देख के कुछ याद आया G2 मुझे भाई वो कॉर्नर्स क्यों नहीं क्लियर कर रहा है Came off a Leaf and Valen on that retake. Nading off Jogamo so he couldn't support Derek in the mark. जब से चालू हुआ है वो नेट वहां से हिला नहीं है हाँ वो एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रख रहा है कि क्लियर तो करूँ एटलीस्ट Look at this retake. Didn't even आई थिंक उसे कॉल थी कि मार्केट मल्टीपल है करके तो उसको लगा कि यहाँ से सिटी कॉर्नर में मार्क करेगा दूसरी साइड से कर रहा होगा राइट से he sat in that corner, held it down. with the nade in his lab. Yeah. प्रो प्लेयर करते होंगे करते होंगे भाई प्रो प्लेयर है भाई They finally break some of the bleeding. Jonah P has his ult online. Full- And it seems full like a bid, very yeah. similar look defensively to what we saw in the previous round. And you see the adaptations. No early A fight from the side of G2. भाई रोटेशन आ जानी चाहिए अब तक एक की सोवा को रोटेट कर देना चाहिए आई थिंक EG, are they going to try कुछ to मिला नहीं है contact out? Another B No. hit. And it's open once more. Ned is in the exact same position as we saw in the previous जोगे round. वो फिर से पिट A गया ना lot of utility नहीं, used भाई, here मैं- on this site hit. मैंने For the likes watch of party EG, बंद कर only देनी है। one flash left on करवा दिया भाई ले क्लियर ले। करवा दिया फाइनली भाई, क्लियर करवा वो बोलता दिया है, वहां Please, पे वहां पे after किया second. एक बार Swings आपके out. साथ किल मिला था एक बार Oh. Cypher all coming out here. 4v3 in favor of EG, and the spike has been planted too. They can take a slight step back. The onus is going to be on G2 to re-establish control.
if they क्या हो can. रहा है? Now funneling out, now trying to take some of the space. नहीं अरे फिर Has already fallen. Derek once again answering the call for EG. Jogama on the swing. No, it's Trent. क्यों कर रहा है swing तेरी तो? Great Molly. मौली देख And they go ahead. I know. Looks like it was just half a pixel short, leaving Jonah P by himself. one, man. A 1v3 would be a miracle with time so short. He gets onto the first, but that's all it is. Well played. Overtime Let's go. on the cards. बस भाई वो वाला राउंड था ना जिसमें वो क्लासिक में था बिचारे को ए प्लेन बक्की उठानी पड़ी हाँ वही राउंड उसमें आफ्टर शॉक से नेट को आया था उधर ओह Completely blown over. EG full steam ahead. आइडिया याद ही नहीं रहता याददाश्त ही Bro, but Comeback. क्या खेले भाई जी? तो जीतेगी भाई मैंने तो बोला ही है इस मैप पे रिएक्शन सही कितना बढ़िया खेले भाई मतलब रिएक्टिव खेले एकदम रिएक्टिव भाई मजा आ गया स्लो बनाया जहाँ तक मिल रहा है लिया अब लग रहा है कि बन जाएगा तो कर दिया पर जो फ्लैंक के बाद G2 जीतेगी जो फ्लैंक कर रहा था साइफर लेके वो गेम चेंजिंग वो है जो फ्लैंक आ रहे थे साइफर के तुरंत भाई डेरेक एक्चुअली अच्छा नहीं खेल रहा था लग नहीं रहा ऐसा खेल रहा है अच्छा खेल रहा है भाई just because of that classic. First round of overtime. G2 on the attacking side. एक second है No early space taken from EG other than Jogamo who's flirting with फोन चेंज कर रहा हूँ मुझे बताना आवाज आ रही है तो मैं ढंग से नहीं ठीक है नहीं सुननी भी नहीं है G2 seeming like they want to take some space mid. Not backing down is Jogamo. भाई ये मॉन्स्टर वाली चीज करा रहा है मॉन्स्टर बोलता है बस पुश कर यहाँ पे ले ले एक एंगल यूटिल देते रहेंगे मुझे जब तक मेरे को मैं पिटता नहीं हूँ सामने वालों से मेरे को Two here. Understanding there is no fault line up for this market fight. The Omen Flash misses though, and it doesn't matter. Nice. Pop does not. Took a little bit of damage, but भाई walks away वो with the gunfight win, and now a momentary calmness. सुपरमैन ब्रो सुपरमैन फॉर अ रीजन Very deep in this corner. वही है अपोथा नाइस और Great trade. Still gets his, that 10 HP left. Revealing area. And once again, the round is Cypher starting pick to करेगा, disarray Cypher as pick we see कर रहा है। fights across multiple areas of the map. Jonah P cheeky with the challenging Superman and getting away with it. What a pop yet again! Valen left alone. Nice 10 HP. Has the spike in hand. कर दे अपना काम कर दिया Talk about being there for your teammate, huh? bro what Apop has just been nuts these last couple of rounds. Superman delaying that fight for as long as he could. Apop getting 3 because of that. कर दिया भाई उसने अपना काम 10 HP for भाई Valen. डोंट टेल मी वैलन निकाल देगा इसके जाता है कुछ इंसेन हो जाता है फिर अरे तेरी तो देख रहा हूँ भाई मैं देख रहा हूँ घूमता रहता है Battle of IGLs. मेरी आवाज आ रही है वैसे रघु Lines going toe to हाँ toe. बाथरूम से बात करने बंद करेगा He's gonna stick it the whole way. no way bro no way sir Nature Bye. sticks it. नेचर के लिए तीनों हाथों की सलामी वेल प्लेड यार क्या स्टिकर है भाई He's not playing those games with Valen. No. Ice in his veins. नाइस I can't believe he got away with that. ये जो निकाला वो पहला खेल And what great play from Apop being there. Look at this timing. insane भाई ये जो मिल They're गया just in time to get the trade. Yep. Gets a dink onto Valen as well. He easily could have gotten a collat there. बिल्कुल तेरे जैसा खेलता है भाई एग्रो तो है क्या था Rookie year, first land, 20 and 18 on Rose won't Cypher. fake, wow. Nevertheless. Not too shabby. EG have the lead for the first time all map. And maybe not a moment too soon. There's a 1 round away from taking a 1-0 series lead on their debut on this ऑफ निकाल stage. ली ऑफ निकाल ली And look at G2. Lead with the opener with the मस्जिद op. जैसा खेलता है भाई सही में मस्जिद जैसा खेलता Last cannon as he pushes his way forward. Trent seeming like they're not done with this map yet. Very good adaptations from G2. Getting the off posted onto that market line to deal with any lurk in mid. Whether that be Derek or Apop, who've been mainly there. And man, And they've then been doing it a Trent lot. भाई वो playing in वो front. रेडी हैं कि सिटी पुश होने वाला है Retake. देखती थी Those are overtime plays right there. हाँ हाँ पिक लेने आएंगे 3 आएंगे seconds on fault line. But we got 3 of the clutch gods right now playing together. And this बढ़िया खेल रहा look at भाई this flash off सुपरमैन the अच्छा top. बैठ It's so clean. It's hit them all. But it's still not enough. Nature was able to pull off that 1v1 before, but 1v4 लिख लेगा क्या This लगता is है very hard. लिख लेगा अरे एम है potentially the makings of a miracle, but it's not ठीक है। really अरे planted in a position that he can do much with. मैं तो सामने आने पे यूटिल सामने आने तो Great reaction from Enter. Jonah P, turning that flash, getting 2 on that CT push.
That's why he's called the professor, Doug. Is he? I think that's what the P stands for. Did you just make that up? So man, he's schooling these kids in the server. We've seen it. All from this first blood. यार मैं Razer Chroma Studio Later. That's a huge kill. क्लोज था बता ना यार. That's the first time we've seen Gap निकला था पता है, सीटी बहुत तो बढ़िया सुपा था। 2 मार देता ना F5 सीटी पिक click करके देता तो निकल जाता था. To bust that out in मैं OT. बताता और हो गई ढूंढ के Perfect आपको। timing. अलग वीसी में जाके करना है जो करोगे. Superman with a judge. Oh no. भाई जज We've सही seen this दिया before. रोंडे ने। हम तो इधर ही Remember, it was करेंगे जो 3 करना है. kills he got. Almost in this exact same place with the judge. And you know what? Something crucial. He's not smoking it this time on purpose. There's no way that nobody would expect that. You He wouldn't wants expect them. him here. Yeah, he wants them to walk in. Let's see though if G2 नीचे still बहुत decide to use नहीं it. expect नहीं कर रहे. Close left corner. एक्सपेक्टेशन नहीं ये है. मैं सोचना The crosshair ये मैं there, सोचना मैं देख नहीं रहा. and the shells cause problems. He's got a TP, or is he going to stay and take the Yeah, fight? done. Tries to get out, and he does Nice just in the fight. nick of time. बहुत ही well played. 30 HP, and he gets away with murder. Isn't that crazy? मैं बोल रहा हूँ इसने Netflix पे देखा है How to Get Away with Murder. नहीं आउटप्लेस को देखा इसने खेलते हुए. Superman on this Omen हाँ, roll. अब समझा ये So Netflix aggressive. कहीं तो देखा हुआ है. बिल्कुल मेरी तरह Gets खेला. out. Dude, most players, they get out नहीं after भाई, their बोल first. रहे हैं नहीं आउटप्लेस भाई. आउटप्लेस की तरह खेला भाई. Hey. I don't know how he's done it. Looks like EG overthinking it a little bit here. No info on the A side of the map. Or anywhere on the map, really. G2 of Kanois. भाई बहुत Yeah, कुछ and this ज्यादा Viper util. This is Exo why defense the हो या Viper is attack हो. chosen by G2. कौन? They're able to देख, feint Cypher कहाँ पे this dead A हुआ है. pressure with that wall and हम्म. But Jogamo not falling for it. Early Nice. fault line come out. The flick onto Ned is gorgeous. You got the dart. They're gonna have to try to deal with Jogamo satcheling back. 70 HP. Jonah P waiting on the other side Nice. of the pillar as he Lead continues out. to swing out. Continues क्या to बात है, क्या बात find है. their way. कहा था ना भाई Take the ये lead जीतेगी back. ये Full मतलब control जीतेगी of ना that. ये राउंड अभी वापस G2 हार सकती है अगर इम्पेशेंट बहुत होए मतलब EG हार जाएगी ये राउंड. कौन पूछा? कौन पूछा? वाटर ठीक को है, टाइम भाई आउट कैसे चाहिए कैसे? यहाँ पे. Nature able और to get his आएगा ball line टाइम back आउट. up and rotate there in time to B side. Well, and Jogamo never left either. It was Yeah, it what was a her shot. भाई जॉगेमो का लकी नहीं लग गया साइफर पे. No, he's on point. भाई नेटवर्क कुछ नहीं होता. That util, man. तो ये हुए. लगता हमारे गेम में होता है. Y'all heard nothing. All right. हमारे You सामने didn't say है. anything. Let's flip and go. Yeah, it's a family-friendly show here. Love the क्या बोला excitement. वो? Love the energy from this EG squad. क्या बोला रघु? Let's fucking go. You can अच्छा. feel the tension of the moment as they enter what is now going to be potentially the last round of this double OT affair so far. Both teams have called a timeout. Yeah. So we have a few moments to kind of break down how we've gotten to this point. For EG, I was talking to Derek before the show started, Yeah. and I was honest with him. I was like, man, I'm not gonna lie. भाई वेलकन भाई आउटप्लेस बोल रहे हैं. जिस टीम को आउटप्लेस ने सपोर्ट कर दिया वही टीम जीतेगी. I mean, we'll see. They look. मैंने बोला कि शक है मुझे इस चीज पे. भाई और क्या? Great fundamental मेरे को तो नहीं plays, है. मेरे को तो नहीं है. Putting in the systems required for them to do great, setting them up for success. The players just having to apply it. And they look like brothers out there. They look very comfortable with each other. Looks like everyone's having a good time. They all have the कुछ same बंदे थे तो mindset. उसने तो वो भी लाया वोटिंग का जो साइड अच्छा G2 का टाइम आउट है. A lot of pressure on G2 because, I mean, they are supposed भाई to मैं be तो favorites in OTO the series. भाई टाइम आउट में तो दोनों Sure, I mean, it is really tough to say when you दोनों haven't ने seen लिया the है. team on the पहले EG stage, ने लिया, right? G2 ने दोनों We ने could लिया है. guess with Total EG no what paper. might happen, but yeah, on paper, yeah, I would agree with that. Yeah. Yeah, I will say too is we जो भाई- चैट पे बोल रहा है ना आके ब्रीच अच्छा है सनसेट पे. पता है मुझे कौन सी वीडियो देख के आए हो तुम लोग. मैं बताता हूँ. अब मेरे हिसाब से लास्ट के नहीं स्टार्टिंग के 10 सेकंड रुकेंगे और फिर अब पूरा एक सेट प्ले बनाया है उसने G2 वाले ने. पूरा सेट प्ले होगा देखना यार. मैं बता रहा हूँ. भाई मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस से हर मैप पे हर एजेंट चल सकता है. अच्छा तब अच्छा. पूरा रैंक तो बता दे पूरी. हेलो Proudly Diamond 3. Another op-up Sage from Leeds. खिलवाओ Let's इनको. see Sage खिलवाओ if इनको. EG is aware this time. देख. remember he was the one who controlled the middle of the. सिर्फ 10 सेकंड रुकेंगे और फास्ट पुश होगा देखना. मैं बता रहा हूँ. 10 Was able to apply some of that pressure. Take. Believe it was 1 2 3 4 5 6 7 10. रुको. That's so insane to me. Tell me.
is that EG has done this A default. भाई रुके हैं, लिया नहीं है, स्टार्टिंग इनिशियल स्पेस तो लेंगे। तुम्हारे 10 सेकंड तो हो गया ना। नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। तुमने तो गा दिया था 1 2 3 4 What an entry from Job. उठ गया भाई, The उठ awareness. गया। इसकी टांग He read भाई। right into that, Doug. They had no idea he was there. That was purely react. बस अब रीसेट करेंगे, कॉल आई होगी, रीसेट गाइस। Somebody else broke that dog. There could be a guy there. बस What an opener for EG. Can G2 respond? Still a bit separated. 3 members A though. And they're only getting closer together. आराम से, मैं भी नहीं मरा होता, आराम से। पूरी टीम में पेशेंटली डुलिश मैं खेलता हूँ। बस मरा नहीं होता ब्रो, बस अभी एंड तक जिंदा रहता। बस भाई एंड तक जिंदा रहता, सच बोलूं। हाँ। Getting so much Thank info. you. He was just फिर a खाता human गाड़ी। drone at this point. is taking away every single layer of this passive defense that they had. They clear the trip, they clear the cam, and they call the rotate over to B. But G2's hot to trot on it as well. फक ब्रो, गर्म पानी में कपड़े धो दिए, अंडरवेयर श्रिंक हो गया। चुप हो जा भाई। Can he hold the line by himself? The one way to spam through. थोड़ा सा आपका वो भी तो हो जाएगा फिर shrink। गर्म पानी में नहाता तो नहीं? To get the first, he does. They seem to have held the line bound, and Joe P left alone, and they will not stand. EG क्या बोला? 15-13 on their debut. What a game! What a map! On G2's map pick as well. आई थिंक साइपर ने कुछ तो है भाई। साइपर ने इनफ इंफॉर्मेशन निकाल ली थी, क्या कहते हैं कि हाँ ना, पूरा मिड का ट्रिप। हाँ, उसने इंफॉर्मेशन निकाल ली थी वहाँ रोटेशन के लिए, और उसके कैम वेम तोड़ के कि पैसिव खेल रहे हैं, आराम से आ जाओ, घूम के आ जाओ, पीटते हैं इन्हें। क्या बढ़िया है भाई, क्या है ना? They needed to clutch back this round, this map win. ये मैप G2 का था ना? Not a lot of people know G2 का था। जी भाई। But that last round was all because of APOP. He was 100% telling his team, come B. And instantly saw on the mini-map they came, nobody for G2 was there. 15-13 in favor of Evil Geniuses. भाई मैं ट्विच पे देख रहा हूँ ना भाई, एड भी रेनबो 6 के esports का है। अब कल जी की जैसी अच्छी थी, इस बार तो ऐसा लग रहा है ठीक तो है। बढ़िया लग रही है। हाँ, बढ़िया लग रही है भाई इस बार भी। इस बार बेटर लग रही है थोड़ी। सुंदर कलर है, बहुत सुंदर कलर है। वीके तो कुछ भी नहीं था जर्सी पे। वीके अब बकवास कर ले जो करनी है, मैप खत्म हो गया, मैप के बीच में बकवास नहीं, अब चालू हो जा। अब खत्म हो गया ब्रो, अब नहीं है मेरे पास कुछ बोल दो। बस साले तेरी तो मैप खत्म, बकवास खत्म। अब मैप चालू होगा ना तब आएगा कुछ समझ। ये बस भाई है वीके को बेचते हुए। नहीं, ये क्लास का वही बच्चा है जो जब टीचर पढ़ा रही होगी तब बात करता रहेगा पूरे टाइम, फिर जब खत्म हो जाएगी क्लास तब कुछ नहीं बोलेगा, वही बच्चा है। हंसूं? हंसना नहीं है भाई, रोना था इस पे। तो भाई सुनना, ऐसे बच्चों को ही तो भाई, ऐसे बच्चे तो हर क्लास में होने चाहिए। क्यों? और क्या तो पढ़ा रहे हैं, टीचर हंसा रहे हो तुम यार कुछ भी। हाँ श्योर ब्रो। हम तो ऐसे ही करते। आप पढ़ने जाते थे क्या? भाई नहीं, मेरा मकसद अलग था। इसके अंदर का जर्नलिस्ट बाहर आ रहा है। बस टीचर देखने जाता था। सर नहीं बोलते भाई, स्ट्रीम चल रही है। यस मैम, जी मैम। नहीं सर थे, सर को देखने जाते थे। आराम से मेरे कंधे पे वो बंदूक रख के शॉट्स मतलब आराम से खुद करता था ये सब। यही आज तक किसी को बोल नहीं पड़ा। उसकी तो उम्र है करने की, आप क्यों कर रहे हो? अबे टीचर लड़के, मेरी शादी की उम्र हो गई बाबू। नहीं उसे बुड्ढा ही बोल रहा है भाई। बस की जिंदगी स्लाइस ऑफ लाइफ है। जिसमें स्लाइस का भी आधा ही लाया है स्लाइस। एनीमे रेफरेंस दे रहा था ना ये? समझ रहे हो? मोत्रिक नहीं समझाऊंगा। लेट यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एनीमे देखता है उसको सबसे लेट समझ आया। नहीं मेरे को समझ में आ गया था, मैं देख रहा था मोत्रिक को पता है कि नहीं। उसको पता है, उसने उस पे जोक भी बना दिया। और अच्छा रोम-कॉम नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते ब्रो। इसका जोक यार अब ज्यादा अच्छा जोक हो जाएगा। बोल दो भाई, बोल दो। मुझे डीएम करता। His titan is not attacking.
जमा हुआ है। अच्छा था ना ये? इसका माई हीरो एकेडमी में नहीं गया। ठीक है। इतना अच्छा नहीं था और ये। इसका तो गर्म पानी में श्रिंक हो रहा है वो। वो तो 1 पीस का 2 पीस। बकनौली करा दो पूरे टाइम। कल की उस पर भी नहीं आ पाऊंगा यार मैं। सेकंड मैच में आ जाऊंगा अगर देखोगे तो। भाई 3 मैच है कल 9:30 कल बजे तक 3 उठना। मैच है शायद। सुबह 9:30 बजे तक उठना पड़ेगा मुझे। उठ जाएगा तो उठ जाइयो, देख लियो। मैं तो सेकंड मैच में आ जाऊंगा। मैं मेरा वर्क है सुबह कल के 10 बजे। लिए मुझे जल्दी सोना पड़ेगा क्यों कल क्या? 9:30 बजे उठोगे ताकि मतलब? जल्दी उठ पाऊँ। अबे 9:30 बजे तक उठना पड़ेगा सुबह। सुबह तो मैच है ना? भाई 3 मैच हैं, 3 मैच है लगातार। तो चालू तो 3:30 बजे ही होगी ना? हाँ वही तो कह रहा हूँ, 9:30 तक उठना पड़ेगा इतना 6 घंटे। ये बोल रहा हूँ। साढ़े मतलब 9:30 बजे देख के उठना पड़ेगा ना? नहीं अबे मुझे लगा नहीं तू सो के उठने की बात क्यों कर रहा भाई? नहीं भाई कल मुझे 8 बजे सोना पड़ेगा ताकि मैं 3 बजे तक उठ पाऊँ। लूफी के पास सेक्टर रिटायर्ड हो गया? अच्छा वैसे आजकल मेरे बहुत लोग कर लेते तो आई थिंक चल जाएगा। भाई मैं तो कपड़े सेट कर रहा हूँ भाई। क्या बात है। आज तक नहीं करे होंगे जिंदगी में यार इंडिया में। क्या बात है। वाइफ मटेरियल बनते जा रहे हैं। वाइफ हो। ठीक है भाई। मेरे पुकी बियर पीकू। क्या बोला? बेटा सोच के बोलियो, 2 जन स्ट्रीम करने हैं, क्लिप हो जाएगा ना फिर। तो ठीक है ना। आप दो जन स्ट्रीम कर रहे हैं, दोनों कुछ नहीं बोल रहे, किसी को तो बोलना पड़ेगा। सही कह रहा है। चैट में किसी से पूछ ले किसके लिए बैठे हैं। चैट वाले गायब हो गए थोड़े। बस फोन। भाई वैसे अमेजिंग बात है कि बिंक्स की इस टाइम भी कभी कभार ना 3-4 हज़ार वॉचिंग आ रही होती है। दैट्स इनसेन। चुचु पॉटर का इंटरव्यू सुन लो। After a really nice comeback on that first क्या बोल map. रहे? Now, last year, EG, they started with a loss in their first ever map, and their last map was a win against HyperX. ये है पॉट और ये हमारे साथ एक बैठा हुआ है पॉट, समझ जाओ। No expectations to the top once again. That's a tough question to answer in a short amount of time, but you know, we just have to trust each other. We have not had a lot of time to build the kind of synergy that we need, but this match rep right here, map 1 was all we needed to kind of warm up into it. It was a very slow start for us. Defense was kind of all over the place. मेरी स्ट्रीम पे मैच नहीं बोली जाती ये सब चीजें very early on, so I'm really proud of us though, sticking in it. All of the guys were problem solving the whole time. The communications is exactly what's going to kind of pull us through and allow us to have a fighting chance this year. So it's great to see that all of the guys are looking pretty natural out there. They're looking pretty, I mean, it's not, it looked like a lot of effort, but they were having fun. So I think that's a good sign for the start of the year. I can sense the comfortability. Thank you so much for joining me, Potter. Best of luck on the second map. It's happening again. मैंने नहीं करी कभी, मैंने इंजीनियरिंग नहीं करी, फिर भी अब इंजीनियरिंग वाला ही काम करना पड़ रहा है तो रिग्रेट होता है। पॉटर जब टीम बना रही थी मैंने बात करी थी इंस्टा पे, प्लेयर्स अच्छे आए हैं इसलिए भाई कैप्टन साइड की टीम बना रहे थे तो क्लोरो ने बात क्यों नहीं करी भाई? बात निकल गया भाई, बात करता क्लोरो से। मैं 2 मिनट आया वॉशरूम जाके। मोरल ऑफ द स्टोरी सफेद का I mean, there was the second time out. अबे हट यार भाई, $2.5 रखते हैं धोने के और $2.5 रखते हैं ड्राइंग के, और तू कह रहा है अलग से clean house, and my goodness, they made it look squeaky. 15-3, obviously the longest overtime we've had so far in VCT Americas. This year, मतलब आपके जो Jordan, my बेसिक man, वॉशिंग मशीन लगी है वो absolutely पैसे बनती है? disgusting towards the end of that game. I like what she उसमें says पैसे about the लगाना trust. डाल पे आपको कार्ड में पैसे रिचार्ज करने पड़ते हैं, वो यूज करने पड़ते हैं। What's that gun buddy? He was a beast though, and भाई उस पे टेकन खेल रहे हो, खेल सकते हैं तो मैं हमेशा ही कर देता रिचार्ज। विकेट स्ट्रीम पे दिखा दिया 100 चिप्स की स्नेक वाली क्लासिक के साथ।
ये देखो, ये तो मैं कह रहा हूँ। वो लोग बोल रहे हैं ये क्या क्लासिक है। Not on display. Derek is my boy for this, honestly. He's come out onto the stage. Listen, this map he's opened up, really stellar performance straight off the rip, I think. And he has got a lot to prove, but I think it's going to be helpful playing on EG because the expectations are going to get lowered again, right? 100 Thieves, mad fan base, these guys are frothing at the mouth, honestly. Look at this clutch percent. 40%, bro. Talk about rolling it back. Rise Derek 2022. Rise Derek Do we need to have a conversation about sample भाई इतनी size or गंदी what, सॉक्स हो boys? गई है कि साफ होने के बाद भी पता नहीं लग रहा ग्रे कौन सी और वाइट। डायरेक्ट के अंदर आग लग चुकी है पता है। बदबू नहीं आ रही तब तक सही है। बदबू नहीं आ रही, बस कलर समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, वैसे भी तो पैरों में होगा, उसके ऊपर पैंट होगा। कोई नहीं, कलर पिकर से देख लिया। करूंगा मैं, तुम से बात करूंगा। VCT खेलना है बाद मुझे भी। Modern problems require modern solutions. Mountain Dew Well, Turkey. there's a lot of expectations on his shoulders given how excellent he was last year. How are G2 going to continue to bring the best out of that fantastic नहीं league बोल that we सकता है, know? कोई दिक्कत नहीं। माउंटेन ड्यू नहीं कर रहा कभी He just has स्पॉन्सर to बस। keep playing the way he's playing, and we just have to take care of the situations where we should have won. I Red think Bull. it's a momentum game. के अंदर का स्ट्रीमर Leaf is चल definitely like जगा a रहा vet हूँ on the team, providing like a common. लाल बैल, Red Bull. It's more like, can लाल we बैल। keep our कौन सी composure team? and GC close out the company. game? Absolutely. Thank you so much for joining me, Josh. Best of luck for the rest of the series. Sponsored by लाल बैल। Similar to what we heard from Josh RT after that What is it? first map between G2 and मैं तो यार अंदर Crows, कभी कभार things are okay. We've got to tighten up the comms a little bit more and try and execute a little bit सुनो more रुको भैया, smoothly. Let's कोई stay on this ऐसा Leaf topic देरी though, हो because आपके it's चलो just गैस worth करो looking at him and the role he कितने fills सॉक्स के on पैर this धुले team. होंगे। 2 4 देख खरीदी इसने दो गैस कर लो। खरीदी इसने 2 जोड़ी होगी और दोनों गंदी होगी, मैं बता रहा हूँ। अब बताओ। एक हिंट देता हूँ, काफी कम गैस कर रहे हो तुम। अच्छा 20 ठीक है 15 थोड़ा ज्यादा हो गया। 7 5 गुड गैस। 7 अच्छा गैस है। 10 हाथों में मेरे लकीर भाई। और भाई मैं तो घूमता हूँ 1 जैसे 2 3 फकीर। 4 भाई 5 तो 6 odd number 7 8 9 10 तो ऑड नंबर कैसे गेस कर सकते हैं, वो भी 7। मेरी बात सुन। Allah for a reason. मेरी मेरी बात सुन। Allah for a मेरी बात तो सुन। ये सॉक्स कहीं और भी पहनता है क्या? हाँ ये भाई socks मैंने कई बोल और तो रहा काम था आती मैंने है। मैं आधी बोल तो socks रहा था कई और मैंने काम बहुत आती है। मैंने तो बहुत गर्म टाइम रखना बाद होता वो है। किया है ब्रो। बहुत टाइम बाद वॉश किया है मतलब अच्छा मैंने कहा बहुत टाइम बाद वो कर रहा आधी तो कड़क हो गई होगी। 18 डेज हो गए। तो बस और तो समझ 10 उसे भी socks तो है। गर्म रखना होता है। कनाडा में वो भी तो गर्म होगा, तो उसके ऊपर एक पहना देते हैं ऐसा बेबी सॉक्स। अबे नहीं, उसके लिए ऑलरेडी है मेरे पास एक चीज। गरम कच्चा। मैत्रिक गरम कच्चा Exactly. हीटेड कच्चा हीटेड हीटेड कच्चा फोन से और के काम पहनना करता है। देख के पहनना, कहीं ज्यादा गर्म हो गया तो निशान पड़ जाएगा। अबे हाँ बे। कोई Burn दिक्कत नहीं ब्रो। marks। आग ना लग वैसे तेरा गर्मी से श्रिंक होता है, तूने बोला था। हजार लेयर वैसे पहनते उतारने में 4 साल लग जाएंगे। अभी गर्मी इतनी से ठंड बड़ा नहीं है, होता अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतनी ठंड नहीं है। क्या टेम्परेचर हो यार रहा है? आपको तो बढ़िया है। नहीं मतलब है वीके, मतलब कहीं लग जाए तो All the ऐसा best, भाई। फ्रिज से बर्फ नहीं निकालने का, दरवाजा खोलने का और थोड़ा बर्फ हाथ में ऐसे ही लगा लेने का। बहुत तो बात मजा करता है नहीं भाई। लाइफ एकदम। भाई मैच देखने आया हम, क्या बातें कर रहे हो भाई तुम लोग? और बता भी क्या है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो आ रही है है ना। स्टेज बढ़िया है, स्टेज बढ़िया है, पर छोटा है काफी। नहीं वायरलेस हेडफोन्स लगा रखे हैं ना, इसलिए शायद ना है, इसलिए बोल रहा यार मुझे तो लगता है मैं वो करना ही पड़ेगा यार। हाँ भाई क्या चल रहा है? रघु भैया क्या बोल रहे थे? हूँ। लेट्स गो पार्थ 2.0 हैं? और भाई समीर पेरिस से भैया है ना। अच्छा इसलिए अच्छा ओ भाई जम्मपेल मुआत्रॉक। बोंजोर बर्लिन भाई। मैं पेरिस तो शादी देखने गए थे, बर्लिन से हैं। बोंजोर कैसा था जर्मनी? बकेट भाई खाया ऐसा बकेट। लग रहा था कि सारे के सारे लोग मेरे को देखते रहते हैं, क्योंकि सारे जर्मन वहाँ पे खाली जर्मन ही बोलते हैं, अंग्रेजी कोई बोलता ही नहीं हैं? यार बहुत गलत बात है, हाँ नहीं बोलते भाई। भाई बस घूरते रहते हैं देख के कि तुम इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो। बस पूरा बस मेन्यू हैं उनका बोल सब कुछ है बोल रहा है ना। हम्म। बस है बोल रहा है तो बस को एक फैक्ट और बताते हैं। बस जापान में जापानीज में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और सबटाइटल्स नहीं आते नीचे। ये तो गलत है, ये तो गलत है। वहाँ पे जाके वो कोई जापानीज में बोल रहा हो तो नीचे में देखने लग जाना। अबे चुप हो जा भाई। पैरों की तरफ देख रहा है, पैरों की तरफ देख के बोलता है मोशी मोशी। ओरे बस दिस।
हेलो। और अगर कोई ज्यादा बोल जाए ना तो नानी बोल देना बस। किमिनो नावा नानी क्या हो गया? मैं वापस आ गया गाइस। चुप हो जा। ओरेनो काई मैं बोल रहा था किसका क्या हगना मिस किया मैंने। अभी कुछ चालू नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ। बोकु नो चिन बची सही दिस। चुप हो जाओ, मैप चालू होने वाला, चुप हो जाओ। अरे वाह, इजी जीत गई पहला गेम। हो गई उसकी कुछ। अरे आउटप्ले सपोर्ट कर रहा था तो जीतनी थी। देखा मैंने ओटी में देखा क्या चल रहा था। Just a few moments away from kicking off this map again. You got बढ़िया यार, Deadlock, कैसा which is मतलब obviously a भाई, ton of deadlock talk में about क्या there. है, You वो got the सही हूं। सही है अब। चलो मैप चालू हो गया भैया, मैप देखो आओ। बढ़िया, ये बढ़िया। Jet is the way to go. They're running the Brimmy too with the Viper. जागे मैं भाई डेडलॉक में Definitely off meta comps on Icebox. जागे मैं He has looked cold on this Brim. Even in the last series. मैं तो हर मैप पे खेलूंगा भाई भाई डेडलॉक। मुझे डुलिश नहीं दिख रहा, मुझे डुलिश नहीं दिख रहा, तुम्हें भी नहीं दिख रहा क्या? हेलो, एक मेरा नील मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। तुम्हें डुलिश नहीं, हेलो। डेडलॉक ही इनका डुएलिस्ट है भाई। ईआरएक्स ने सारी ले ली ना। बताओ तेरे को साले। ये अच्छा था, ये अच्छा था। Yep. Think about it. We're 30 seconds into the round. They haven't made it very far. It's super impressive. There's so many traps and so many flashes on the field right now. कल के अलावा सब जानते हैं क्या मेरे को? शायद नहीं जानते, शायद। And it did not matter. Superman with the opener, 20 HP as he goes for a second. आउटप्लेस पूरा है, वेलकम के अलावा कौन-कौन जानता है? Timing from Jaw. He's behind him. कोई नहीं, आउटप्लेस भाई मीट चैट पे आ जाओ। Borderline flawless. Superman was the only one to fall, but he got his. Next level counter है ना? See off the rip the setups they have. We're gonna throw the deadlock trap right in front. Get the info that there's multiple players there breaking it. Protocol. One way goes up for a Superman. Molly goes back yellow. बस sit down करा दिया Easy भाई। kills with the classic there. It ऐसा takes कौन what, तो 2 भी shots रैंक to में get a हो ही kill. नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। और जॉर्ज And में then से Jaw बहुत goes टाइम to से sit there. Wrapping बहुत all टाइम the से डेडलॉक खेल रहा है ऑल द रैंक स्ट्रीम पे जब भी जाता था डेडलॉक खेल रहा है, मतलब ऐसे कम से कम 1 महीने से हो गया होगा ना। मैकेनिक समझने के लिए क्या? ऐसा बोल हर मैप पे लिटरली। हाँ, और मैकेनिक समझने के लिए तो टाइमिंग, मैकेनिक्स सब कुछ डिपेंड करता है, वही तो। इंसेन है भाई, As you saw in the previous round, वो सिर्फ this time a little bit of कस्टम में हो ही exploring नहीं from सकते। G2 confirms that there is a turret watching the middle of the map. क्योंकि सामने जान दोगे for sure। ए पॉथ विंडो देख रहा है। भाई वीके का बड़ी दिखा। नहीं देख रहा। मैं देखेगा, क्यों देखेगा? टरेट है ना, तोड़ दिया क्या? Fuck। It seems like Net is, sorry, APOP is Chat पढ़ने लगे। that they could be भाई Z10 में अपना looking around this डायरेक्ट स्पॉन kitchen में लगा area रखा because था। Jogbo is अबे वो तो जब मिड पुश होता है तब के लिए टरेट है वो। on that angle. Not giving anything. Oh, he's about to have to deal with what's on the other side. डिफेंस में all बोल the रहा हूँ। time. हाँ, डिफेंस में बोल रहा हूँ। You can't put In the kitchen. Does Jog know? हर राउंड पे Yes, he ना। does. Drops net. I don't know that he's expecting the second though. Is Leaf has अटैक में स्पॉन पे कैसे लगाई? डिफेंस पे भाई चुप हो जाएगा। Oh my gosh, he got hard swung. What? नाइस शॉट बे। I don't think his gun was out in the animation. Something just clicked in his head last second. Wait, there could be a guy up kitchen. वो अब दिखा। भाई अपोज है या ए पॉट है भाई? हेलो एमा। That's why this guy's on this team. What? EG looking to put together another flawless round, of course. Cast her curse. But it's another. ऑलरेडी थोड़ा रिएक्शन वाला गेम प्ले दिखा रही है इजी, तो आई थिंक कॉम्प ठीक है उनके हिसाब से कि मतलब मस्त इन्फो वगैरह के लिए अगर अटैक के बोले हो तो उसमें राउंड तो खेलने दे। वही मैं, अरे नहीं नुबड़े पिछले मैप पे भी ऐसे खेला उन्होंने, देखा नहीं तूने? ये होता है जब आप सेकंड मैप ज्वाइन करो तो। यार वीके साला ठंड में नेल्स की कैसे Already, from the likes of EG, knowing that they gave all that space to G2 up that tube area. अब वो सोचो कि वैसा हो रहा हो आपके साथ और आप बरिस्ता भी हो। Already putting their KJ here. APOP. Aggro turret to control that area, just as I said. Great adaptation already made. मतलब इंडिया आगे कुछ। भाई दोनों इनिशिएटर ए स्टार्ट कर रहे हैं, देख रहे हो तुम? ठीक है भाई डन। You've got the two sensors down B long as well. Look at the वीके setup. को स्टारबक्स ले जाएगा, वीके काउंटर के पीछे खड़ा हो जाएगा। मैं करता हूँ। Look at these traps. नहीं वीके क्या करेगा? अपन चुप रहो भाई। पार्टी बनाएगा यहाँ। बकलोली कर रहे हो? तो ठीक है ना, देख मैच इसको देख रहे हैं। इसको बुबाटी लाने बोलेंगे तो काउंटर के उधर जाके खड़ा हो जाएगा। Where do you go? And this is so sick from EG. They put the traps on. मुझे का नाम बोलता मैं लिखता हूँ। ये मैं कर लूँगा, ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। You got a little bit of noise आप mid. जाके ड्रीम 11 पे टीम। Oh, here comes the flash play. भाई अब जाके हुआ है Has to सबका। take a step back. Dogma going forward. You mentioned it. Holding W. A pop falls. Dogma from up top, and
And now they finally find out that's where he is. It's a bit of a scrap. They drop the wall down and they force G2 to reset. Timing भाई. G2 is gonna run into those traps that I was talking about. नहीं फंसेंगे ये लोग. 30 seconds left. फंसेंगे. Not being able to play off these trips, but it delays. Is it enough time? There's a second. Both traps, and now you see the value from the deadlock. Can they delay the plant? Viper Molly should be coming out anytime soon from Superman. Another one out. You're right. वो stun की वजह से Great response late from हो गए G2. इतना देख रहे हो? 10 seconds left. A 1v4 for Derek. Surely too much to deal with. But you see some of the gimmicks, you see some of the plan behind Deadlock. Great response from G2 though. And had Trent थोड़ा CS वाले में भी थोड़ा सना लेके आते हैं ना टीम्स में यार. हाँ कर सकते हैं. हर मैप पे सना दिखा. अरे क्योंकि अपना जो बच्चा है ना उसको सोए सीख ले वो बड़ी बात है. भाई वैसे मैंने एक दो वो देखे हैं. सीरियसली बोल रहा हूँ, अब जोक वोक मत समझ. मैं लिटरली एक दो मतलब काफी हाँ बोलना विके यार. काफी इंटरव्यूज वगैरह देखे और काफी मतलब मैं मतलब कोचेस वगैरह की चैट वैट में जाके चीजें भी पूछता रहता हूँ. तो सब लोग पता है क्या कहते हैं लिटरली. एक तो सबसे प्रैक्टिस में तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस. एक तो आप अपनी मेंटालिटी को ट्रेन करते हो. सुन रहा है बस. फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए तू राउंड हार रहा है या जीत रहा है. तू एक हफ्ते पहले ही या 2 दिन पहले ही एक शीट बना और उसमें लिखते हुए चल कि हमें सिर्फ इस दिन इस चीज पे फोकस करना है. भाई वो सब हमारा काम नहीं है. वो सब कोच कर लेता है. हमारा काम नहीं है वो सब. वो तो आइए मैं सही नहीं कह रहा. मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कोच कर लेता है. बट वही मतलब हर प्लेयर सेम पेज पे होना चाहिए ना उस चीज में. वो तो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रो प्लेयर्स के लिए होता है कि कुछ भी हो रहा हो, जो टीम ने डिसाइड किया उस चीज में हमेशा 100% कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि बस ऐसा का ऐसा ही जाए. ये सब मुझे देख के ये सब सुन के अब ये चीज समझ आई कि कितना गलत होता था जब अपन खेलते थे. From what I said earlier, Jogmo plays this deadlock as a duelist. He got first contact there and repositioned 2 different times. And still, सीख रहा है. nobody else from his team got contact. He got the first blood. पता नहीं यार. And you're seeing a couple of instances उस now लेवल पे where आएगा. he's playing it on टाइम the लगेगा edge, उसे right? भी. He'll go out, he'll take a fight, and then he'll get away just with enough time to get a wall down. चुपचाप मैच देख लो. बाकी बजर ब्लेड ने थ्रो कर दिया था. बात लगे आराम से टॉक्सिक. And I like EG's game plan overall here. Jogamo starts B, puts the trips down. On his way rotating to A, he's walling off mid so that late lurk doesn't come through. They have the KJ turret or alarm bot holding that to the area. And it just allows them to have 3-4 players on the site by the time the hit comes. यार मैंने सोचा था लेने का, बट मैं भी सोच रहा हूँ क्या लूँ. EG cooking with this. मैं लेने वाला हूँ भी QC के हेवी या जो भी मतलब इनका कंट्रोल वाला हो. पर मैं पहले के एजेंट तो ट्राई करें. Take one more time and you swing out. Derek just continues to hasn't really slowed down here. Just suffocating them on the site from every angle, and Derek has this ult online, Gecko ult. Do they use it for retake? Do they use it for aggressive info? Gotta keep a lookout for that. Jogamo one off the deadlock ult. We might see our first deadlock ult. We'll see if we get it this round. और मैं जो कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ मैंने नया लिया था न्यू एक्स $20 बस 20 का मतलब 1200 रुपए. भाई 2 इनिशिएटर एक ही स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. Look at the stun! And the spam! They've got these protocols. क्या करेगा वो? They get the wall down, they still have a sensor up. So even if they need to, Superman can give up the space and they still have control here. Yeah. Preferably Western Digital. अपना उठा के आगे पीछे लगाएगा सेंसर. Very wise of G2 to work up on this A space. They know. विके बोलेगा. महंगी मिल रही है अभी तो. विके बोलेगा 2 इनिशिएटर एक ही स्टार्ट कर रहे हैं. मैं देखा नहीं रुको. देखना दोनों गेको और केओ ए पे स्टार्ट कर रहे हैं. You do with the KG util on the other side of the map. Yep. कंट्रोलर बी पे है ना रोकने के लिए. हाँ बट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए खड़े दोनों. हाँ बाबा आई नो बट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है ये मतलब कि मतलब बी पे एक लेन है तो ऐसी ही मॉलीज वगैरह से होल्ड हो जाएगा. ऐसा स्टन और मॉली से होल्ड हो जाएगा वो. There's the first. I don't know that it tagged anyone. It was just a little bit out of reach. Huge kill from Trent. जो 2 लोग ए पे खेल रहे हैं उनकी वो स्लो डाउन करने में ज्यादा हेल्प कर सकती है. उल्टा बोल रहा है. जो बी पे खेल रहे हैं वो स्लो डाउन करने पे हेल्प कर सकते हैं. उल्टा बोल रहा है. ए पे वो ए पे बी वाले चोक डाउन कर सकते हैं ना. चोक पॉइंट्स है वहाँ पे जो कंटेनर है बी एंट्री का.
उसमें यूटिली ऐसा है कि वाइपर वन वे डाल रहा है और ये मॉली डाल देगा तो चौक हो जाएगा पूरा, स्टन तो है वहाँ पे, वो कुछ भी साउंड करता है, फाइट लेने की ट्राई करता है। पकड़ लिया पीछे पीछे बहुत चल रहे बढ़िया हो art क्या? थी, बहुत बढ़िया art पीछे थी, चल बहुत रहे हो बढ़िया क्या? पकड़ लिया वाला तुम लोग कितना पीछे Starting चल to रहे हो? convert. पीछे चल रहे हो क्या? यार रिप्ले भी चालू हो गया। हाँ रिप्ले चालू है भाई। ट्विच पे नहीं देख रहा But Remix this looks really good on Icebox right now. Look at this. Remix पीछे It's actually the perfect ult for this map because there's so many corners that you have to clear. And this comp that they're running, they have so much utility to clear those corners and play the retake. They don't even need a duelist. And when you have Jagamo on your team, पौजा है पौजा। फ्यूचर देखने लग जाओगे, ईजी जीत गई। सुनो गाइस मेरी बात सुनो। चलो भाई डेडलॉक में देख रहा हूँ मैं सब कुछ चीजें। वीसी में तुम बात कर रहे हो, गेम से रिलेटेड बात करो, घर वर की बातें बाद में करो, ठीक है? बस भाई घर मैं की बात क्या करें? प्लीज। घर की बात क्या करें? हाँ बता बस मैं बात बोल लूँ। बता। एक नाम ले लूँ क्या? नहीं घर की बात क्या करी? चुप हो जा घर की भाई। बात क्या करी? अच्छा, लॉर्ड बथोरा के स्ट्रीम पे पीसी बिल्ड हो रहे थे इस टाइम पे, ठीक है? तो भाई पीसीस की बातें चल रही थी। अरे पर अभी मैच देखते हैं ना, मैच के रिलेटेड बातें करते हैं। अपग्रेड करना है, मुझे भी पीसी अपग्रेड करो भाई करो, टाइम आउट में करो, टाइम आउट में करो, मैप के बीच में तो करो। तो भाई एनालाइज तो करेगा ही। without being punished. And we've seen that 2 times with अरे हाँ करो the other करो, traps that I've seen. पर मतलब What I would गेम भी like देखो, to गेम भी see देखो, from ऐसा Leaf बोलो। is maybe a dash on गेम top of देख the रहे हैं other. कि जो बोला उसे पकड़ लिया। They do end up this is a little different. बिल्कुल ही यार। Killjoy utility kind of leaning A, but they have nanos on top of the sensors here. They've got their hands full with his KJ deadlock combo. And I think this is EG's ये वाला जैसे बहुत easy था जो being able to जॉर्जिनो ने see यूज किया G2 था, play on अभी this देखा map वो previously. पाइप्स में बीच Putting में all मारा the बस, deadlock बस utility बीच में towards मारा। that B side with Superman as the anchor with these पूरा lights हुआ plays. I mean, this setup is brutal, man. As soon as the sensors trip, the nanos pop off, Superman swings, जेल and का the वो round is कॉर्नर over. कवर हो गया था, I think The only success G2 has had so far has been fighting into the B side. पीछे होते तो सामने वाली टीम तुम्हें ऐसे ही मार देगी। And that's GPU easier भाई said than done. क्या ही बोलूं। The mini-map. Exactly. समीर भाई वो Maybe भेजना trying to सीपीयू find some कूलर, space. Only person with CPU free cooler one भेजना shoots सस्ता inside सा। his net. सीपीयू कूलर भाई He's just so confident playing this A retake. सीपीयू कूलर से याद दिलाया मैंने, मैंने सिड को Oh, बेचा था pop. अपना सीपीयू कूलर से, आज तक पैसे नहीं Jiggling. There's the rifles. That was the only rifle I had. Derek gets the best of them. मैसेज कर दो WhatsApp। Dark backside, but again, I mean, you have so much passive info. It doesn't matter if you necessarily bite a little bit harder on this fake because you still have all this utility. Oh, they're ahead of it though. Wise पकड़ा to जाएगा ये it तो। already. नहीं First one found. Should be traded. Oh, Jagamo just barely misses him. भाई जेट लेके लर्क कर रहा है, छी भाई। डेडलॉक क्यों? You know, I mean, we didn't see it, but we heard it. yeah. Didn't have to see much. You got the brimstone up, backside, A-Paw sidestepping it. मैंने अब नोटिस किया कि ब्रिम है गेम में। How much further? मैंने भी अभी जब अल्टी गिरी मैंने कहा है ब्रिम भी है क्या? The problem is Derek's walled off. They have to clear the wall for him to finally be able to join in. पे ब्रिम नहीं पसंद। Still has some util. अच्छा है। एक्चुअली उनका क्या है कि मॉलीज पे खेलना चाहते हैं, वो आफ्टर प्लांट वगैरह खेलना चाहते हैं, इसके लिए आई थिंक ब्रिम लिए है। Nature and A-Paw, the only two that stand. हाँ Not a मतलब ton of ब्रिम health between the two either. मतलब उन्हें मॉली वगैरह ही खेलना Time है। short. देखियो मॉली, अब ब्रिम का मॉली आएगा। Should be a save. जो तुम ब्रिम और वो What a great round from Leaf. मॉली और एक खौलराट है। And they, I mean, we've been talking a lot about Deadlock and how good she seems and how they're doing really cool stuff with her. But that's one of the problems. When people talk about Deadlock, they go, "Oh, well, you can just slow walk the sensor." It's not guaranteed info. Right, exactly. It's not guaranteed. And there you see, that's a perfect example of that. Yep. Just that second timing that Leaf took. मैंने भी नहीं देखा। Honestly, that was a huge first blood from Derek there. भाई ये क्या, On top. भाई ये क्या स्मोक डैश करा उसने? Leaf कुछ भी स्मोक डैश कर दिया उसने। timing doing so much damage. He hit everybody. करना था। रैंडम शिट भाई, एकदम ये मैं साइनेक्स की मतलब साइनेक्स की तरह खेल रहा है भाई, बिल्कुल ही रैंडम शिट। Really stepping it up for his team. And good ults online. भाई बस बहुत बढ़िया है भाई थंबनेल। रघु ने बनाया। They've been focusing on building those ults. Maybe they can snowball from this point on. अच्छा था but आज जो फोर्थ Early wall up online. कल और कुछ बनाएगा मुझे देखियो ये। Deadlock up. भाई रघु भाई वो सब नहीं, रघु भाई वो सब नहीं। रघु भाई नहीं। असलियत बना दो। नहीं। If Egypt are kind of leaning into the false sense security that G2 may have, you know, they figure out, wait, we can just slow walk the sensors. Now you're going to have to deal with an op on the other side, and there it is, value found. Leaf on the trade, though. ये याद होगा फिर आपको। शूज कैसे लग रहे थे? 1 for 1 usually leans for their attacker's side though. भाई मतलब ऑफ तो वेस्ट हो गई।
Now they don't have to worry about this deadlock utility on the मैंने समीर से पूछा ही था पहले समीर से ही पूछा था Average. Average है ना क्योंकि I want to point out EG is so smart for not over rotating to be here. काफी सही That's the प्राइस में मिल expected गए ना reaction, right? 9.5 The deadlock dies. The op is down. You saw 2-3 people towards B. Look at that. It just confirms it. Superman pushing all the way through B, getting the info. उन्होंने ये छोड़ा ही नहीं है वो देख This is an B 8 push hit कर right गया now. है. What can they do? Yeah, you've got the KG Util holding mid, and that's going to allow Apex to rotate over to A early. Derek with the flash confirming there is at least one. 155 including tax. Lockdown Sarah, they can be High able to find their way out. smoke से Early is not. You've got Derek and Apoc who are playing just Smoke on से the काम edge खराब of हो it, so गया. should be able to find safety, गया, मिल गया. but there's a flank out from Superman. There's a flank out, but it seems like Ned is ready. Taking his time, though, is very, very, very smart from Superman. Timing is everything. Wait, what? नहीं. The half clear again. Just so unlucky today, it seems like. Don't tell me if Ned DF करेगा. Derek and Apoc still have a shot at this, so 2v3. They've got some util they can play with. Early molly out. Yeah, making sure there's no playing on the other side of that box. Wingman is off. Uh-oh. Not half. Wingman's dead, just like that. You're right, not able to get it halfway क्या? across the finish line. Ignore? Apoc has taken so much damage. Derek has to play a little bit aggressive here. Tries to isolate. The fight's not able to connect onto the second. Wow. Apoc is not around for long. That's another round in favor of G2. 4v4 ही था मतलब ठीक था. कल ना मुझे बहुत बुरा लगा वो जब भी ऐसे विंगमैन डाल रहे थे लेवियातान वाले लाउड वाले उसी टाइम प्रीमिल्ट कर रहे थे. हाँ अबे 2-3 बार. विंगमैन मारने के लिए प्रीमिल्ट. हाँ वो बाइंड पे ना बार बार. और वो पता है कैसे अल्ट कर रहा था वो तूने ध्यान से देखा हो तो. बता. मैं तो मतलब बाद में क्लिप देखी जब विंगमैन जा रहा होता ना तो क्राउड आवाज कर रहा होता वो तभी अल्ट कर देता वो. समझ रहा है वो ये भी नहीं कि विंगमैन जब बैठा है तब अल्ट कर रहा है. भाई मुझे ब्राजीलियन फैंस इसीलिए पसंद नहीं है. हाँ ना बे. ब्राजीलियन फैंस के नहीं कर रहे थे आवाज भाई. Both sides with blades online for Leaf. He's gonna have to get through the pit and the wall and the sensor. And they see this and they're like, yeah, I'm good. I'm good. We'll try this side. ये बात है बस. They might try to flip here. जापान का crowd Late drone. वो big man के नहीं करते हैं वो भाई. Derek does not have his ult. Available in this round anymore. मेरी तरह. Oh, that's a good flash, but no committed kill. और ये मेरी तरह. No, but it was close. You see, Doggo is not trying to join in. Just like me, bro. Bro, just like me. हाँ, bro, just like me. मेरी तरह ही मरा है. And EG just play off of each other so well there. 3 different people peek at different times, but the perfect times. क्या मतलब 2x करो ना. The knife is going to tag a little bit. They have to take a step back. Trent is really far up and he's by himself. Will they leave him here? 45 seconds left in the round. There's plenty of time. What a mid round. भाई ये किस They make a ton of noise to suggest they're leaving, trampling their way B. Entry और fallback pick. And then भाई there's वही मैं सोचूं किस बेसिस पे रोटेशन कर रहे कोई है ही नहीं भी पे तो उनका. इनको ही नहीं अभी का था. G2 have thrown. So far. And this is not up utility, this is up close and personal. Trent waiting on the other side of it. He has to jump spot and try to clear both. Apoc with 3 on the round. The Sheriff doing work. Oh, so close. Just one below left. He's gonna have to take a step push कर देना चाहिए सिटी. Reload. He has ult and he's out. And the flake's coming in. They're gonna have to take the fight to them. They're stuck on the site. They have no choice. Superman on the flank. निकलेगा. A stinger. Is that gonna be enough? They know where Ned is. Nice. He's dropped him. Another from Superman. He does it again. The clutch king. Huge round for EG. A dodgy buy. Being down numbers. Not fighting on any of the feints. Well played, भाई. And there were plenty of them. 2x करो समीर भाई 2x Let's करो. talk about this rookie Apoc getting 3 1Ds in that round. 3 Deagle Nice, kills. There's the first for the Red Bull clutch for EG. They played that. I mean, they played that so well. भाई वाइपर कौन था वो स्टूपिडली जंप करके निकल रहा है ऐसे कुछ भी करके. इससे बढ़िया वो 2 जगह से निकलते थे. सेम स्मोक से 2 आगे पीछे करके आउट होते थे. अबे वो लोटस का पेपर वाला याद है क्या? क्या? ध्यान नहीं. वो क्लिप नहीं देखी ट्विटर पे? नहीं बता. बता दो ग्राउंड हो जा. Presence mid at all. The early knife, they get Jogamo on an aggressive angle. How's Apoc up here? Apoc has joined him. What a flash! Oh my gosh! Nice way. और भाई पूरा Duelist KJ now. भगा दिया पीछे भगा दिया भाई. They just decided to turn it on in a couple अरे of rounds. पीछे भगा दिया भाई. Derek gets a kill. Look at how far up that wall is. Did he get a spam kill? No. He's so far up. Ned falls.
Trent maybe finds something special there. He does. He's gone so far up undetected, but if they don't find any room to work B, it's not going to matter. उसने एक्सपेक्टेशन रखी थी भाई. Able to take care of Superman. Numbers advantage in favor of the defense. Oh no. The timing. Spike scooped up. वो देख वाइपर को देख मिड पे देख वाइपर को देख वाइपर को देख. Forward spots Derek. Last player Is that standing. enough to rotate to come through? What is Derek on Let's right now? let sit down ही I'm करा not दिया. seeing any of these kills, but I'm just hearing one bullet at a time. He's just getting headshots. He's efficient. He's online right now. Best gun in the game. The destroyed trip should हाँ confirm where बहुत Trent ज़्यादा. is. No armor. Does he invest the Viper ult? कर देगा कर देगा. That's the question. कर देगा 1v3 कर देगा. 76 कर देगा HP. कर देगा. Does. Question answered. ऊपर चढ़ेगा और पड़ जाएगा. Round here, Trent wins. 42 HP now. गोली खा भी गया. The potential to do it on his own. He gets the first try to spam out, not able to get away. A big investment there. Spam से खराब हो गया यार moment. Yes sir. आधे लोग तो केवल सोवरट्रोन बनने के लिए करते हैं. ना भाई होती है इसलिए I think the KO is very smart there. बॉडी शूट करने में अभी $1000 का फाइन पड़ेगा ना पे सॉरी बोल. The rookie feeling himself. अरे बाप रे दो जन को बॉडी शूट करने से Trying to नहीं get in the होता. heads of टीबैक करने से होता है. जापान नहीं है. Up 3 rounds. 1v3 कर. AJ on the other side. Oh. जापान When Derek जापान is में तो feeling बॉडी it like होती नहीं. that. उनके क्लाइंट में. Look at that. This little pixel. उनके में ब्लड भी नहीं दिखाते. Yes. I mean, we might और see. skull Derek कोई भी गेम में Crazy बात. कोई भी गेम में अगर स्कल भी होता है तो हटा देते हैं. Crazy बात है. सबसे ज़्यादा जहाँ पे ये. Top still in hand. This time a little bit of focus mid. भाई जॉर्जेमो का निकल रहा है ऑफ से कुछ. मेरे को तो लगता नहीं है 2 राउंड शटडाउन ही हुआ है वो. Jogamo opping in the bottom mid area. हाँ 2 राउंड Repositions. शटडाउन He हुआ. has his ult back. I can't wait to see this ult. I want to save Kaldi. Derek has been an absolute menace on this side of the map. ये देख दो पकड़ ले. And that allows nature ये to देख नीचे कहाँ चले गया where this push, he might be able to find a crazy timing. बाप रे भाई टाइमिंग. Once again, the ये cutting बोलने of दो noise, भाई. the introduction of doubt. So patient. सबसे ज़्यादा मजा देखने में लाउड को ही आता है बस. The silence and the starving of information. वो लोग जो shit करते हैं ना वो Nice expect bait ही and नहीं switch करता. that's gonna go on. Derek's gonna get first contact if they पीछे want. क्यों जा रहे हैं वो दो इधर आ रहे हैं और वो पीछे जा रहे हैं समझा नहीं मैं. To him. अच्छा बॉम्ब लेना है. How many will nature get is the question. I mean, he can But just let सबसे him best walk by. retake देखने में Fnatic का मजा आता है भाई. G2 just Fnatic भाई इतनी structure है ना मतलब. Again, remember they tried this at the Hey, beginning of the round. भाई वो they don't care about like nature चाहिए should get all the info पांचों here साथ में खेलो अपन and खेल call to देंगे. fake, but वो the वाला rotation's already coming in from the likes of EG. Nature, his moment to strike is now. But again, it's only one because नहीं. his intended B. We finding open the करा दिया space पूरा यार. to get the spike out onto the site. It's going to be planted, courtesy of net. And Superman trying to get ahead of that timing. अरे but यार सुपरमैन को नहीं मरना था barely बस. off there. Second too late on that one way. वो उसने पोजी भी क्या ली बीचों बीच खड़ा हो गया साइड पे Dumping जाके. some of the utility at the foot of the spike. एकदम क्लिस्टर वाला किया. ओ And बच knife गया भाई confirming there's नीचे. nobody close by. Jogamo with ult, with op. Beautiful. गया. Confirmed. ले सेट डाउन करा दिया. Spanish की Oh stream my में. goodness, what a shot from Leaf. Derek has already started to defuse. He has to take a step back for just a moment. He's the only one left up. And the barrage of utility from G2 was just too much. भाई वो समीर भाई की तरह एल्ट क्यों कर रहा है प्रो प्लेयर है वो तो. And that's समझ all नहीं आया कौन सी करना चाहिए Leaf उसने. again at that B site, besting Superman in these 1v1s. आई थी उसके. And I like the idea. I like the idea from Superman. Realizing that it is a fake. A second sooner, and that might be a whole different round, right? That one way pops up before Leaf sees him. He's able to cross the yellow. निकली वो बीमेन Get a couple गाली off करवाना those चाहता deadlock था. trips. एटलीस्ट एक बंदा निकलवाना चाहता था. एजी में मेरे से प्लेयर्स होते हैं इविल A lot of बिल्कुल. aggressive energy from both teams today. मेरे जैसे बोलना These चाहता है teams समझ just रहा hate each other or something, but maybe a future कुछ भी निकला rivalry राउंड कुछ भी निकला राउंड वो तो that we're है getting यार. to see right now. The वो thing स्टेज is किसका बढ़िया लगता है? EMEA अल्ट फक्ड हो गई इसकी. EMEA का स्टेज बढ़िया लगता है अपना पैसिफिक का अमेरिका अमेरिका का इस बार चाइना बहुत का. हल्का है भाई. इस बार बहुत सेम ही अमेरिका का लास्ट जो था वैसा ही है. अमेरिका का स्टेज हमेशा ही बढ़िया रहता है वे. वो लोग अच्छे से इस करते बार हैं. नहीं. मैं तुम्हें बता रही हूँ वो यहाँ से पुश करेंगे तुम ये करो. मैं बता रही हूँ वो ये ऐसे पुश होने वाला है. अब ये होगा तुम बात करो क्या कर रहे हो मुंह में क्या ले रखा है बात करो. अमेरिका कर रहा है भाई. ये देखो ये जो बोल रहा है मत बोलो. खुद बोल रहा है ऐसा सब. बस भाई मैं बोल रहा था वो वाला माउस पैड गिफ्ट हो जाता तो.
कौन सा? बस भाई का भी अंदर का कंटेंट क्रिएटर अच्छा। भाई एक बार छोड़ो यार, क्या यार। बस भाई ये देख लो, ये देख लो स्मोक लेना मुझे गलत सिखा रहे थे। नहीं नहीं मेरा वाला परफेक्ट है। एक बार पता है क्या था, मैं तो बताता हूँ। हम ना ग्रे फॉक्स के अगेंस्ट खेल रहे थे और 12-8 अब थे हम। अच्छा मुझे मुझे बस मुझे ग्रे फॉक्स नाम सुन के झूठ लग रहा है। बस अबे भाई पूछ ले बस से। हम 12-8 अब थे, तब उनकी ये वाली टीम नहीं थी, तब उनकी टीम थी कुछ वो वाली थी ASDF वाली ऐसे टीम थी। players, ASDF वाले। ASDF वगैरह वाली टीम थी। तो हम उनसे 12-8 अब थे। मैंने मर्सी को बोला, मर्सी टाइम आउट लेते हैं और बात करेंगे और ये राउंड निकालना है। बोला टाइम आउट के लिए ना, अपना कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। 14-12 हार गए। आज तक याद है, मैंने लिटरली यही चीज बोली थी, क्योंकि मुझे पता था कि भाई जिंदगी में मैंने बस एक चीज सीखी है कि कमबैक हमारे अगेंस्ट ही होता है। चाहे वो कॉम्पी हो या ये हो। तो मैंने कहा टाइम आउट लो, डिस्कस करेंगे 1 मिनट, करना क्या है अपन, अभी तक क्या कर रहे हैं, सांस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बैक टू द मैच। That's enough for EG to have seen and call for the rotate. क्योंकि जो एडवांटेज उनको मिलेगा ना, जैसे टाइम आउट लिया अपन ने, तो उनको एडवांटेज मिल जाएगा कि भाई अपना मोमेंटम कम हो रहा है, पर उसका एडवांटेज उन्हीं को मिलेगा। ये कह रहा हूँ उस सेंस। Derek gets the best वो देखो expand दे रहा है। Superman ultimately falling, Leaf playing in the smoke. What a rat, peeks out, gets the kill onto Derek. It's perfect. भाई वो तो The मेरी तरह। timing is methodical, it's flawless. आपके जगह स्पैम देगा तो जब रीलोड कर लिया तब जा रहा है लीव। It's gonna be a lay. ऐसी है भाई, मर्सी क्या करे। Push towards mid. Know that you're gonna get enough. अरे पर वो शॉट नहीं था ना, क्या पता फेक रीलोड होता। 2v4 like this, there's no flank, there's nothing like that. Yep. Would have to be ridiculous. Here. कोई नहीं, उनका इको ही था। Do they go for this? Waited a little while. निकल तो सकता है, निकल तो सकता है। निकल सकता है। They both fall. That's another round for G2. अरे लॉस्ट है राउंड। So hard to play. हाँ गया। आपका 2x करो यार आप। Rounds is looking pretty good for the likes of G2 against a 2x कर लो ना यार। Demon और किसका ड्रामा हो गया भाई, एक double senti. Honestly, Demon और फ्यूरी का ड्रामा हो गया था ना कि वो दोस्त है मेरा। हाँ सबका दोस्त है मर्सी यहाँ पे। लेमी के अगेंस्ट हुआ है। लेमी कौन है Take a भाई? look at it one more time once again. Well, of course Derek gets a headshot wallbang. अरे बस भाई हाँ। You know what मैं वो वाला बोल रहा था, अपना लोटस सी साइड पे वाटर घुसते हुए वाटर जाने का लेन है ना। अब वहाँ कुछ पे भी उसने बोलता केस है। डाला। हाँ। साइफर ने। हाँ। 2 बंदे 2 साइड से साथ में कूदे, क्लासिक इलेक्ट्रिक सामने गन वाला था। हाँ वो देखा था मैंने। हाँ ये मैंने देखा था भाई। ये तो अच्छा। बहुत ग्रिम स्मोक थी, गिरी हुई और दोनों कूदे साथ में, एकदम कूदे और दोनों ने बस मारा था भाई। This फिनिशियस feels a जूनियर ने bit more भी aggressive as far शेयर as where किया था some of लाउड this का utility कैप्सूल, is मैंने अभी देखा। from EG. And you've got the Vinny Jr. nano, or excuse me, the alarm bot further चलो up. भाई बताओ You've किसका got the कैप्सूल turret बताओ further ना। up. We've talked about this wall a couple मैं of बोल times. रहा था It जॉन सा seems मत like कहे, they're a बस मेरे little bit अकाउंट more में उठाना। intent. आप तो on मना pushing कर रहे थे सबको aggressively. स्किन्स लेने से। भाई हाँ। स्किन्स तो नहीं ले रहा ना मैं तो यार, ये तो G2 right now G just trying to और beat up utility. हाँ ये सब तो कर सकते हैं समीर भाई, थैंक यू सो मच। They've cleared the मेरे turret. लिए नहीं कर सकते। ओह सॉरी सॉरी। इंडियन टीम को ठीक सपोर्ट है। करना है ना, तो हम सबके आईडी में जी का सही नाम। यस लेट्स बस गो। भाई को Nothing like बस that. भाई को You got कोई और Razer दिला देगा, spy. बस उसको पैसे भेज देंगे बस। And this नहीं whole बस round के लिए has सब been बैंड set है up भाई, बस के लिए स्किन भी to बैंड fake है। this बस के B लिए मैंने ये भी pressure. कंडीशन डाली थी कि मांग भी नहीं सकता ना किसी से ले सकता है। और अगर ले लिए तो क्या करोगे? He's भाई up को by मैं himself. बोल Oh, he's up by himself. इसको डिलीट कर दूंगा Derek gets और a kill, मैं but it मेरे seems घर like he's gotten past the बस He's gonna get away. If he had gotten पर that बस kill, भाई all बोले of कि कर ले G2 तो। are ready to यार just book it. नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा, नो कमेंट्स। 30 seconds left. Apoth waiting. दो Nice. ऑप्शन है, या तो जी का ले सकते हो या दूसरी great net. चीज। नाइस भाई। Jonah P falls. Swing out from there. कुछ ज्यादा बढ़िया सिट डाउन नहीं करा रहा। यूटिलाइज नहीं कर पाए। Net gets the या best फिर जो of कोई him. जेन्युइनली पसंद Invests the है। ult. ओ भाई क्या हाँ सिट डाउन सादा बढ़िया करा रहा है Nature's still looking back at spawn. You gonna spam him here? भाई। नहीं। They're not gonna get the spike down. It's too little too late. फ्रेंड भाव नहीं पहुंचता है। बढ़िया। 7-5 half. Switching sides. नाइस गुड राउंड। Derek online right now. भाई क्या फेक किया भाई, 13 and 7 lead, 12 and 8. कि वो लोग बैक हो रहे हैं, हम तुम्हें प्लान करने देंगे और फिर उन्होंने डाउन करके मार। हाँ ना। I mean, this kill was nuts. नहीं भाई वो वाइपर वाला अटैक Blaming him for going for these. वाइपर वाला अटैक कर इसकी थी भाई। भाई वो सब ठीक है, वो जेट मेरी तरह क्यों खेल रहा है? डिफेंडर्स ने अगर उनकी वॉल अरे भाई समीर भाई आप ये देख लो यार। भाई वो जेट मेरी तरह क्यों खेल रहा है बता दो लीग को। कॉपी क्यों कर रहा है? ये देख लो। Brendan Sideshow and Balla to talk a little bit about Deadlock's utility and his setups. जो क्या कहते हैं चूज डाल के यार। जो इनका बीजी का कॉम्प है ना, मोस्ट लाइकली मतलब बी पे ज्यादा एडवांटेज दिला सकता है उनका कॉम्प, अगर अटैक पे बोलूँ तो मैं।
तो मैं भी बी की तरफ ज़्यादा डिफॉल्ट देखने को मिलेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि जब डेडलॉक है तो वो वॉल ऑफ कर सकते हैं कोई एरिया को, एक को, है ना? मुझे लग रहा है बी पे ज़्यादा वर्क करेंगे वो डेडलॉक लेके। क्या लगता है तुम लोगों को? Quick, because G2 cannot get onto that B side to really set up and play their राउंड स्टार्ट होते ही बोल देता भाई, रीड तो है। Dude, they are cooking. I mean, Genuine. this wall on the pistol, you can't get through it. They have a re-clear setup with the Gravnet, and Jorgamo's just fighting it like a duelist. He's buying the op. I mean, this really stumped G2 for the भाई first. काफी बढ़िया था वो सिट डाउन करा के KO मॉली फेंकना। Down sensors too. You get the wall in mid. That shit is asleep, bro. Look at him. He can't get out. It's so funny. जेट को बिठा, जेट फंस गई थी मिड पे वो। Watch the value here. Watch the value. Grab that into the stun, dude. Leaf has no. I mean, he's getting destroyed. But it's still, I'm really curious how this is going to work on the attack side as well. Yeah, the rebound ult. Oh, it's nasty so business. Dude, that ult is going to be so good on the attack side as well. That composition, it might look really defense-sided, but it's got really big ultimates to work with, and a flash dizzy combo. EG are going to cook on the attack side too. I'm telling you, they got the strats. That thing is crazy. Any combination with the dizzy is insane. And then you also have 4 mollies or something like that. His executes are going to be tough, guys. Yeah. To be honest, it's kind of credit to G2 that they actually managed to figure stuff out on the fly, but it's not over yet. They only managed to get 5, and like I said, I think they're going to be under a lot of pressure. Yeah, it feels like it's taken every little bit of calling prowess and discussion to see, how animated everyone's been on G2 to try and figure this out. Let's get the second half underway. Back to our cast. It's been Hook, hit the gritty yet. I was just going to hit the I think they just made fun of us. I didn't hear what they said, but there was a whole lot of laugh at the end of that throw. Ball was talking about how the Sideshow was talking about how he really likes this deadlock on attack. मुझे लगता है most of the rounds B end up करेंगे ये लोग जो इनका डेडलॉक वाला सेटअप है, मुझे लग रहा है बस। Nothing found yet. And if you're G2, you do not want EG to get the bomb down because of those 3 mollies, because of बार-बार आता रहेगा वो, है ना? all the utility that they have. You have to disrupt these hits. 10 सेकंड भाई, 10 सेकंड भाई सीधे। You see the defensive killjoy utility towards A. You can flash in every 10 seconds. Overpowered है, 30 seconds में आ Nature जाते हैं। holding on to his knife still. 10 seconds में आ जाता है। हटा ही दिया इसका को इसलिए हटाया था कि क्या क्वाइट प्ले में। Apoth on the rope as well for backup. Quiet with it. But there's help here. G2 has 3 members. And the killjoy utility. There's the first clear. Jogamo died on the opposite side of the map. They're trying to strike simultaneously on opposite sides, and there it is. The trap has been sprung. Clip run stride there for Trent. Apoth up in heaven, 48 HP. It's just Superman now. बिना वाइपर वॉल के हिट कर लिया उन्होंने, वाओ। बेवकूफी बोलूंगा मैं। वाइपर वॉल उतना है भी नहीं। That's what I'm speaking about. Disrupting the hit. अरे बट इन्फो तो नहीं है ना कितने बैक साइड है, कुछ सीधे प्लांट में भेज दिया उसने। Poor Gecko. क्या पता क्या कर रहा है? Things you hate to see. मुझे लगा सेफ प्लांट पे भेजो। Poor guy. But still सेफ पे भी जन से टूट जाएगा ना वो। 10 seconds though. कुछ करना नहीं था, सीधे फ्लैश मारना था या खाली कुत्ता ही भेजना था खाली तो। Oh, it whips. He has a chance. प्लांट मिल गया। I mean, it's a slim chance, but there is a chance. अरे बाप रे। भाई लीग को तो सिट डाउन कर दे रहे हैं लोग। You just never know when this guy's in the server. Oh, yeah, for sure. Val's gonna get the defuse Leaf and stop the points towards his ult. But मजा लीफ। हाँ ना। लीफ हर बार फिट वहाँ पर है ना यार, बेचारे को इतनी तो यूटिल पड़ रही है। मारे जा रहा है। A nice setup, nice contact play. I liked what EG was cooking up, but the trades ultimately came through for G2. डैश तो उसके बाद उसने वो करा ही नहीं है, येलो वाला डैश उसने कमिट करा ही नहीं है उसके बाद जो राउंड पिट है। Killjoy Molly on the site for the actual hit. Maybe a knife. Something would have been good on the actual hit. बॉल से राइट साइड अटका दिया। Make sure that Viper wall doesn't go up. यार मुझे लगता है बी करना चाहिए था उन्हें, पर ए पे इन्फो तो लोग थोड़ी। क्या पता क्या प्लान है उनके पास। वॉक इन किया ना, कॉन्टैक्ट प्ले किया। But still they don't have info about backside now. यूटिल पे फास्ट उसने वाला कोई है ही नहीं ना एजेंट। अरे that's not the point. पूरा लो ना मैप कंट्रोल लेके चलो कॉम्प पे तो। He's got the bulldog. He's been tagged. There's the challenge. बाप रे। I mean, you have to force the swing there, right? Like, you know that you tag the jet, probably have a better gun, but you try to punish. It's just a gun diff at the end of the day. Yeah. Not much you can do there, but there's always a chance. If they get that kill and he doesn't dash out because he got knifed, that could open up the entire map again, right? अब 4 बंदे पिक करेंगे इसको, देखना मिड पे। ये ले। Starting to hear some rotations come through as G2 cleans up in flawless fashion. भाई बड़ा टाइम आउट लगी है। Yet again. अभी नहीं लगी।
ले लेगी भाई के बाद लेगी बाय वाले के बाद ये हारेंगे तो ले लेगी how it depends by Getting close to that हारा brim तो ult. ले लेगी Nobody really close for ults on the side of EG. एंट्री हो रहा नहीं है Just kind of going through the motions in that eco round. एंट्री का मतलब मैप कंट्रोल पे खेल सकते हैं क्योंकि गैको That का is फ्लैश two बार-बार first आता bloods रहता है there for Leaf at that B area. We'll see if they decide to switch his इमेजिन positioning अगले up this, पैच में राइट this यही round. नर्फ कर देगी गेको का तुम दो नहीं जब तक चैंपियन नहीं होगा आई डोंट थिंक सो वो नर्फ करेंगे नहीं Still at B on top of नहीं मतलब ही क्या है फिर उसका नहीं हाँ एक फिर तो तुम Looks like he उठाने has a भी really जाओ good read हाँ। of how Joggle likes to play this side of the मेहनत map. करके उठाओ लोगों के बीच से एंड नहीं फिर सिर्फ 2 बार चैंपियन तक गैको छेड़ेंगे नहीं देखना है until unless कोई ऐसा कुछ कर दे कि भाई ऐसा कुछ है नहीं उसके पास करने को Keep going too. With Balin over his shoulder, they've taken some of the space. I like that. Leaf just doesn't like what he sees there. He's like, I'm gonna back off. Let me play some spam. भाई वो पुश का वेट Got कर the रहे हैं KJ इधर Molly to delay. Plant. बी ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो बी तो A little bit closer to राम having बाण है भाई ults on mine. डेडलॉक के साथ Spike's not even in hand right now. EG are just wanting to feel things out, see if they catch anything. Meanwhile, that aggression defensively from yeah, Acer just keeps coming. You're forcing them, you're corralling them and funneling them B. Derek wins the 1v1 on Leaf. And this opens up a lot of options for EG. Where do they go with him? Look at ए जाएंगे ए जाएंगे ए जाएंगे so patient. ए जाएंगे ए जाएंगे He heard the rotate. एक बच्चा भाई This all stems from that kill, Doug. वो इन्फो दे दी के देने की रोटेशन आ गई है एक होगा जैसा था ये ले एक भी नहीं है आप भागे थोड़ी चलो Yeah, he's got to know. He's got a vandal too. Cleanly dealt with. नाइस वर्ड डेरेक भाई ऑर्डर है यार Balin and Jonah P left alone. पहले ही बोल दिया भाई। Jonah P in 1v5. हट यार उसने मार दिया नुबड़ा है भाई It's a great नटूरे response from EG. And it all stems from that pick that Derek got onto Leaf. All और the के way लेने आ back रहा to है B. और के लेने आएगा Opens up the entire map. Makes G2 be loud about the rotate. A-Pop, not scared to take that space back from G2 and challenge if they are there, ultimately. And then, I mean, Derek doing Derek things, killing 2 more people in mid. That should be traded 100%. Oh, for sure. That's what happens when you go up against the likes of a रीड player फिर like सही है Derek, who's और mechanically बढ़िया खेला भाई very, very talented. So EG takes the lead के back. बाद मास्टर्स के बाद Gecko और एक सीरीज के online बाद that मास्टर्स के quickly, बाद though. और एक That सीरीज के quickly. बाद अगस्त यार Look at that. नाइस शॉट यार उस पे देख पे You mentioned how aware Derek was there to clean that up. Net may have had a timing. ये मोड तो मैंने पहली बार देखा डेलू You guys can have him. Up in the hands of Leaf. Still playing top yellow. He's been solo B, I think, almost every single round so far. भाई VCT के official There's nothing really changing from the likes of G2 setup. No. हैं भाई ये वाली वॉल तो ज़्यादा बढ़िया VCT है अमेरिका वैलोरेंट अमेरिकाज वाले पे Yeah, this time Juggernaut really pushed up. भाई ये वाली वॉल तो ज़्यादा बढ़िया है भाई योगी में पुश करने के लिए Leaf is aware of this. उसका लाइनअप भी है हाँ Not हाँ an angle that you usually बस भाई आपने वो pre-aim. हाँ That was close. मैं यूज करता हूं भाई पोस्टर के ना Now starting to creep पोस्टर forward. के वाटर व्यूज देखा करो आप नीचे देख मिस कर देगा Centimeters. Oh, it's so tense. कैसे पता उसे भाई लगा Lands the ऑडियंस shot. मुझे लगा Meanwhile, on the other ऑडियंस side, the ult has been used. The space has been taken. They should be able to get the spike down. And this is Balin is ult. There it is. That's going to delay for a little bit longer. अब बच्चा जाएगा Meanwhile, G2 seems like they're going to send a couple across the middle of the map and अरे कहाँ गया maybe hit बच्चा? a late flank. Superman हमारा wise होता ना to गेको it. अल्ट कैंसिल करने के बजाय हमारे पे अल्ट मार देता मैं तो मैंने वही तो बोला They've made 2 attempts now at committing to getting the spike down. Maybe third You time's want the more? charm. Here's So more. much delay utility from G2. गाइस मैं 2 मिनट में है All नेचर got picked back up. They finally managed to get the spike down. नेचर तो खेल रहा है पर अभी Take this, Doug. And you've got numbers. खेलते खेलते But मुझे it's still a big खेलते ask, मुझे you're कॉल right. कर रहा है बोल रहा है भाई आगे क्या Balin करूं, has no बताओ। smokes. You still have the wall बता you क्या can play था, around. बोल रहा था। Here's the opening. अरे Trying to snap onto Ned, he cannot. देखा अब मैं उससे बात करने This जाऊंगा thing wide फिर तो open. मुझे तो कॉल आ ही नहीं सकती क्योंकि सुपरमैन भी I खेल don't रहा know है that his fifth's gonna be able to pull this one off. Yeah, this is a save. This is Yeah. a save. You let context this one go. And EG नहीं actually आएगा तो वही बात doing the जैसे same देखो मैंने बोला था ना योर strat टाइटन as इज नॉट pistol round. अटैकिंग That was the whole idea. वही Juggernaut lurk वही है up B. कॉन्टेक्ट 4-man hit on A. This time G2 not playing on the actual site साले तेरी टाइटन ने अटैक करके क्या कर लिया है and lead. गुड आंसर नो कम बैक Bye bye.
And that retake was gorgeous. बहुत बढ़िया retake किया है You gotta इन्होंने think maybe Juggernaut has to play this. अरे नहीं वो नेचर का सिटी पे देखना पता नहीं क्यों Leaf so far has had his number. नीचे busy हो गया था ना Maybe he thought Leaf was already. अरे हाँ लग रहा He है was plenty patient. वो देख He waited a while, but you're right, it just wasn't enough. When you're in those positions where you have to learn. गुड फ्लैश भाई गुड फ्लैश You have to wait for your team to. करना चाहिए अब हमें यूज करना चाहिए Had he had waited a split second longer for that Gecko wall to come out, maybe he hears Leaf fall off for the B line. Maybe Leaf will peek into him then and he's ready. Dialed in on ऊपर his देख cross. ब्रिमस्टोन का चढ़ा है Nature's used his ult. He Look at pushed Valid. away FA. Great Gecko flash. Not able to find anything yet. That's a deep wall. With the Viper Molly on the bomb. Jonah P has to wait on the other side of it. You start to see the spam to try to clear it out. बढ़िया snake bites वगैरह अरे 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 To survive the opening shot अरे up. A 3v3. Spike's still not planted. They might flip this. Superman's gone exploring. I don't know that they can. Yeah. It's too far up. Oh! Jonah P's clean with it. Rare whip by Georgium. Now you have a fight on two fronts yet again. Can Superman find the timing? Can he find the space? Surely he's not expected here. पिछले मैप पे करी है भाई उसने But does nature creep forward to draw some attention, create some space for Superman to take? अच्छा There's the first swing. It doesn't connect, and now सेव करनी चाहिए हमें से you've got to understand that there's likely निकाल सकते हो सेव करनी चाहिए ये वैल्कन की आवाज थोड़ी ब्लाइंड पे लग रही है ऐसा मत बोल भाई क्या बोल दिया Great Molly. बेइज्जती कर दी भाई Can he make it to B in time? Ups to stay. 15 seconds left. I don't know that he really had much of a choice. He still has to अब निकाल लेगा अब निकाल लेगा 42 and 50 HP. अब निकाल लेगा अब निकाल लेगा Plenty of armor. He's got plenty of time. No utility. Guns on the other side. Trent. Great jiggle from Trent. The first leg shown. And Leaf cleans it up. अरे बत्ते कॉर्नर से बाहर क्यों निकला What a jiggle. That was perfect. Shows him an elbow, baits out the shots. Leaf already knows what to do from that point on and saves the op into this round. And EG, they look good on their sight hits, but not able to get that bomb. हाँ ना पीछे की देख रहा है पेनिस की स्ट्रीम देख रहा हूँ किसकी अच्छा चुप हो जा भाई Very confident in the retakes. Nice try. वाह बोल रहा है Sorry. They sound like us out there. Yeah, TNT. NT. मेरे को समझ आ रहा है सब आगे कैसे देख रहे हैं Leaf बस still ये without खाली 1 मैं point away देख from रहा हूँ Blades. पीछे में बाकी से सारे लोग And they've won चैंपियंस won 4 of the last 5. बल्कि कौन देख रहा है Starting to बल्कि see तो देखने perhaps वाले some of भी the नहीं cracks of this भाई मैं combo. देख रहा हूँ भाई मैं तो And इसलिए मैं lack of पीछे चल रहा हूँ I love you समीर भाई Beautiful देख रहा है setup. मैं भी देख रहा हूँ मजाक की बात मुझे बस को हैं Straight down to the smoke full on the board. background. The whole idea is if the Gecko Flash comes out from Raptor. अगर खोल के दो रखी तो तीसरी भी खोल दो मेरी भाई इनको ही कल वाला उसमें लगा रखा है बस लगा रखा है ये डेडिकेटेड स्ट्रीमर और नॉर्मल स्ट्रीमर You hang on to this. G2 with a 2-round lead, and they're just continuing. क्या टैप मारा उसने ट्रेंड में नहीं अपडेटेड भाई बिंक्स का कल वाला दिख रहा है मुझे तो थंबनेल वो तो भाई वो दिन में 3 स्प्रिंट कर रहा भाई पैसे में Gecko eye from seeing him. Allows him to get pushed up अरे in पर the कल outer का spot. We break the मेरे कल turret for our दिख रहा है teammate. अब यार लोड नहीं होता कल And we get the first blood. भैया भी क्या पता मुझे स्ट्रीम Beautiful मुझे setup for भैया Leaf there. फोन पे मैं दूसरे And this is what we see G2 5-6 दिन पहले का do दिखाया so था much but मैं with their settings previous में जाके duels, whether it was वापस Sai, एक whether it was Tex, setting them up अब for देखो ये success. राउंड देख चेक कर लूं स्ट्रीमिंग टू बार So important to do that. इंपॉर्टेंट राउंड है We गाइस finally क्रूशियल राउंड है amazing performance. I mean, he's gone aggressive again, eh? देखा क्रूशियल राउंड है वाला इसमें दो वाले कार्ड में एक चीज और है पता है That's that conditioning, जो वो होता conditioning है that deep smoke on the orb. बड़ी होता है अगर आप अकेले खेल रहे हो तो वो अलग रिएक्ट करता है डुओ के साथ खेल रहे हो तो अलग रिएक्ट This is a really nice defensive setup from G2. You've got the alarm bot mid, you've got aggressive space past 410. हमें नहीं पता भाई And because of that, you can lean Same. forwards. I don't know कैसे मर गया? where that shot came from. So guys, duo win. So Jonah P has been playing that spot quite a bit in Nest that sees the heaven. I think wall. solo के ऊपर लाइफ हो So गया I मेरा don't know तो if Apop saw that in the previous round and pre-aimed it or he just flicked them, but huge first kill for them. अच्छा See बात है if we get that on the replay. Here's the reaction for Wanna go G2. mid, Superman's there. not a problem too much नाइस भाई Him and Apop locking this area of the map down. उसके साथ खेल खेल के मैं कि अब तू Leaf and Trent with plenty of money. What a cool flash. सिट डाउन ही करा देते बेचारे को तो मैं बारी कैरी करने वाली कैपेबिलिटीज अनलॉक कर लूंगा नाइस शॉट
Drops the first, still a 2v4. भाई ये क्या ऑफ मिलेगी? नहीं Right at it. Still so tough for Leaf here. छोड़ जी, सही करा उसने, सही भाई क्या मतलब? They're just so रीड तो heavily है। outnumbered. पकड़ा ट्रेंड गया ट्रेंड और उसने पीछे मुड़ गया आपको। That's a W for G2. Yeah, I don't know that Trent has the same. Going for it. A shorty. टाइमिंग पे टाइमिंग ब्रो। They both fall. Yeah, they have plenty of money. It'll be fine, but a huge round from Apop to keep this thing close. Nice भाई। ये तो टाइमिंग हुई पता है। And I speak so much about fundamentals. We get the first blood on the side of EG. What do you do after that? You already have your massive players towards the B side. मुझे प्रॉब्लम हो रही है भाई वो Verizon का राइट Yeah. But this right here, this replay, so aware EG. तो वो रेड कलर का टिक है वो G2 is मुझे going to want to try to हाई even the numbers. नेटवर्क Try वाली to चीज की याद दिला रहा है get even again, right? They have to make a play and just waiting for that aggression. देखना Punishing both of them and not going down. We'll see here what अभी they do on the देखना, वो attack जब भी side. आता है वो Jogma high has his ping ult something online. I जो भी आता believe है। this is the first on the attack side. See what वो मुझे they उसकी याद have with दिला it. रहा है भाई PTSD दे रहा है भाई High The average smoke ping. just causes so much High average ping का doubt in the mind. क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? The guy pushed up Low is the server guy FPS in होता है that bro। smoke trying to finesse us. Guys, That's how they know, but एक सेकंड रुको, उसने वहाँ पे उसने सेंसर क्यों लगाया वहाँ पे? एक to सेकंड। get that info is always rough. Look, they're still worried about it. वो देख, जोजेमो ने वहाँ सेंसर क्या लगाया? Time to work with, to be fair. क्या Apop has his वो ult स्मोक के अंदर हो too. और बाहर निकले तो वो स्टन हो जाएगा किल लेने से पहले आया वो गलत नहीं। सही लगाया है Setup here. अब देख स्मोक में लगाया I उसने। think Jarl will be using this आया ult वो on the नहीं head. एक डाला फिर वो पहला वाला वापस निकाला ब्रिम के स्मोक में तो स्टन पता ही नहीं, खबर नहीं पड़ती है। Make the adaptation of changing the plant तो spot. यार बात नहीं यार, अब डेडलॉक का बहुत Knife on अरे mine. भाई Viper ult अगर comes वो out in स्मोक से reaction. निकला Does that? हाँ, और Oh, शूट it किया didn't hit. तब होगा शायद। Valve trying to find some safe तब zone. लगाया था But he somehow manages to dodge all of it. Not taking any damage. And this is a very deep He's KO. gonna creep forward. Oh my gosh. Is he gonna get the timing? Gets one, gets the second. Fallon not able to get on the third, but the damage has been done. He's bought the time. They get the spike down. Numbers in favor of G2. In an obvious situation like that, that's going to be tough to find value with Superman creeping forward. Pit still in play. This wall too. Does it block him? Does he have to jump over it? और बोलते ही वही No, it Gone just now. goes down. Are you expecting भाई Derek डायरेक्ट here? मार सकता है इसमें दो लोग। No. ये ले ये। Oh, he's not able to get the यार, second. बोला देखो A दो 2v2 समीर spike. बिल्कुल साइनेक्स और समीर भाई जैसी जेट। There's not a lot of time for this. If they're going to do something, they've got to do it now. Whoa. The fadeaway, leaving net by himself, having to ये देखो है ना इसलिए लगा था वो स्टन, समझे? We're tied at 10. रहने दो भाई अरे नहीं, वो जब उसने जेल पे लगाया था, जेल वाला बोल रहा था मैं, स्टार्टिंग में लगाया था ना उसने, जो निकाल दिया था वो पूछ रहा था मैं तो। मैं तो गलत लग गया So होगा हाँ वो गलत लग गया था शायद उससे। Different layers, able to भाई fall वो back, ऊपर से aware of his कोई utility like ना that. वो जंप भी हक दिया था Derek, another ult. हाँ लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। उसको जाना हुआ था हाँ। And honestly, he did as much as he could in that भाई moment. नाइस। भाई ये है भाई ये वाइपर अल्ट है तो भाई पाइपल के लिए बेस्ट है भाई इनसेन रिएक्शन टाइम ब्रो। As like a last desperation attempt for sure. Valen ने ऐसे I don't know who Superman killed there in screens, but भालू ओपी। maybe a little bit of a fumble from the side of G2. We're right back into the action. We're already seeing some of this early aggression from EG towards B. They get the sensor down. They know the op is on this side of the map. Cool op skin. Must say. Cool up skin man. Cool ही Derek has his टीनस की ult चैट में चल रहा है कि बेबी जे टेक online. बिठा दिया। Is there a challenge? Too scared to peek and go to warp up. This guy needs to get out of here right now. भाई डैश भी नहीं कर He's सकती। trying. Manages to find safety and solace around the wall. If that was any other character than Jet, you have to crash Dash walk भी your नहीं way होता? off. नहीं कैसा हो रहा? है देख तो लिया, नहीं होता, कुछ नहीं डैश होता। होता है बट बहुत ही कम डिस्टेंस पे होगा। I mean, both with all these rounds just feel so tense. Think about how much time is Yeah, elapsed. We're yeah. still in a 5v5 setting. बिल्कुल तेरी तरह जेट नहीं खेला उसने भी, किक से बता दे। Puff is really far up, but Jonah P भाई gets मैं that kill. जेट You याद wonder if you दिलाऊं imagine that's the lure. Sorry bro, Turn sorry. attention towards B, but you've got the ult that's gone out. You've got the wall that's cutting off things back in Snowman, making things really difficult. But Dogma having to push forward. Does he get punished for this? No, he's been funneled into the fight. Superman's there to help him. Wow. Jonah P on the trade. Nature should be able to get the पकड़ा रे spike इसको। down with no real challenge. Super has to go huge here. Jonah P have an angle here. This ball has been up a long time. भाई लीव कर क्या रहे हैं?
Oh, a 2v2. Nature was detained. हाँ नेट भी देख रहा है He's been उसको patient. He hasn't moved at all. nice pick nice pick Jonah P with 4 on the round. Urus. The ace from Jonah P. चलो भाई इधर और किसी The professor. I mean, I'm starting to believe the name now. Jonah P, The Jonah high Damn, power ace भाई। from G2 at just the right time. अरे वो एने के लिए ही है सिर्फ Damn, Quick भाई। shout out. You gotta Damn, follow भाई। I by Power on socials. They'll be giving away a PC every single time an ace happens. Go ahead and tweet at them. Hashtag unlock your ace for an opportunity. And if you win, make sure you let Jonah P know. Send him your thanks. That was a filthy round. भाई शीश भाई लिंक खोल के देख लेना insane reaction time भाई मजा आ गया He looks comfy up on that stage. Yeah. भाई केसनेट ने 3 एस मार And दिए थे Superman, I mean, I said it. He had to do some heroics there, and he really did a एक lot. ही मैच में He got 3 kills in mid somehow. But then Jonah P happened. कहाँ पे डलता है वो गिव का? अरे And उसके that VCT takes के us to a जाट में आ रहा timeout, courtesy VG. अबे एक These गिव games अवे have हो been रहा है. so close. सही खेल रहे हो तुम लोग बस थोड़ा सा करना है सही खेल रहे हो हर एस के लिए एक पीसी गिव अवे ध्यान रखो तुम अपने यूटिल बराबर यूज करो एक काम करो कि तुम टाइम गिनो यूटिल्स का हाँ ऐसे बोल रहे हो For either team that loses, obviously there's still a chance at this. They'll have to dance one more time. They'll have another opportunity to make it out, but बोल रहे जाओगे वो यहाँ पे यूटिल ऐसा करना है ऐसे करना है फेक करना है पूरा फेक कर दे फेक आ रहा है And the narrative so far has been Bye, on this yeah. defense side for G2. Bye, bye. Disrupting. जब It really has. प्लांट के लिए खेल रहे लोग प्लांट के लिए खेलेंगे ऑफ निकाल लेना उसने देखना पोस्ट प्लांट खेलेंगे क्यों आप करा रहे हैं अरे क्योंकि करेगा देखना तू Understanding what they कुछ need to प्रैक्टिस do. करके आए ना And this is सीख new. साख क्या करने दे they're up really far on this barrier. 2 new players offering right now. Jogamo off on the board. वो तो है वो तो है Cycling these things. वो तो है And that allows Leaf to go aggro. Yep. Yeah, they're gonna go aggressive B here. First time they've done this. भाई वो Oh, they're just नाइफ waiting. They're ahead of the knife. Yeah, they're ahead of it. They don't know, but Jogamo still hits a shot. अरे यार आज खा 100 Furious लेगा Valen tries to find his timing, gets a kill onto Nature. And once again, the round thrown नेचर into भाई disarray. रुक जाना नेचर रुक जाना Here's the नूबड़े reaction, Doug. Taking fast control. मिड ले लिया नाइस 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 Trent trying to trade it back, but he's not. नाइस मिला भी खुल गया खुल गया नाइस भाई नाइस I don't know why Valen just walked through the smoke like that. He had all the info, learned about broken and mid. हैं There it is. Shout out Wingman. The little guy finally got it down. अच्छा Numbers in favor of EG. तो कुछ और Junkies Wingman weak. पे। Net has the op. You imagine you just try to save it here. Oh, ये देखा उन्हें पता लग गया है विंगमैन से हुआ है प्लान. Wow. Yeah, Check that करने की should जरूरत decide the round. चुप हो जा What a round from Apoth, man. देखो Again, मैं बोल man, रहा like था he बस भाई continues to जब step up in these अपना big बच्चा moments. साइनेक्स मारता है अपन खुश होते This हैं ना player हाँ समझ रहा has been making हूँ the जैसे वो right प्लान कर रहा है तो decisions. समझ रहा Reactionary. Same feeling, bro. It's just been Same sick to feeling. watch every single time. And you know, yeah, he gets punished sometimes, but Wingman he running mode understands का बढ़िया that he mode has to take that Wingman timing running during mode देख रहे हो तुमने? in that VCT small की window chat. that he has, right? Nice. Because if he doesn't, the round's over and you just lose. उसके गीगा चैट वाले Very मोड्स nice देखा having ना a player सारे like that on वो your Can team. that save the op? They know where he is now. The money's not great for G2. This is big. KJ diff? We're not going to get to see it, are we? KJ diff? Can he dance around and stay alive? Oh, पैसा I है mean, that's tough, man. You go for पैसा the ही no नहीं है scope. पैसा ही नहीं है इको No आ scoping गया Valorant इको आ is very गया I mean, no real choice ये there. जगी जी जी गया इतने मौके नहीं मिलते And so now G2 call a timeout. Exactly. The money's not great. ये देखो ट्रायंगल अब पता चला क्यों लगाई उसने आप Jonah P was going to get tremendous value with that soul ball. I thought so too. Between the भाई solo अपन and दिमाग Valorant's से कर रहा aggressive है position. भाई पहले उस पे टैग होने के बावजूद इतनी छोटी लाइन में कैसे नहीं मारा भाई वो जाना पी डिस्ट्रैक्ट हो गया वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया सही बोल रहा है पॉज आ गया वहाँ पे लीफ ने चिल्ला दिया होगा ऐसा कैसा सुन एक अपना थोड़ा लेफ्ट राइट लीफ कर ने चला दे भाई क्या कर रहा है इको है एक साइड स्टैक होगा वाइपर की एल्टी तो वाइपर की एल्टी यूज होने वाली है दूसरी साइड पे आई थिंक जॉश ने नोटबुक निकाल लिया मिड मैं सच बोल रहा हूँ मिड लाइफ निकलना चाहिए मिड मिड एग्जीक्यूट आए मतलब इनकी तरफ से हाँ ये इजी मिड ट्राई करेगी मिड ही ट्राई करेगी क्योंकि इको है हाँ भाई लीड पे थे और अब लौड़े लग गए वो तो है ये तो पिछला मैप भी था
भाई एंट्री कर रहा हूँ भाई mistakes, you know, like Alan walking through that smoke, even nature, giveaway में trying to walk through that. पीसी ले आना साथ में स्टार्ट करके And हो या ना हो सारे पार्ट एक एक अलग से डिसेंबल करके हम लोग को ये होता है सब लोग को अलग-अलग जिसको जौन सा चाहिए वाइपर अल्ट भी नहीं है भाई फ्रंट पे वाइपर अल्ट भी नहीं है भाई मुश्किल है Imagine most of the conversation KJ के भरोसे कर रहे हैं take place in the following round. भाई मेरे को कल माउस मिल जाएगा मेरा And for भाई EG, if you're in this position, you just want to get through this as cleanly as you can. Save all the weapons you can. Ever thought of trying Viper? It sets you up really nicely. तो सोचो भाई और उठाया जेट ने दूर If दूर I'm तक है EG, भाई I'm अभी trying to build this KJ ult. I know that the buy for G2 is dodgy. I want to farm these orbs. सारी साइड लाइन But he's on an island over here holding for the aggression, which is fine, you know, safe play. They do have the KO ult. Will they invest it into this? दोनों रिवील हो गए कौन बस वापस नहीं आएगा Again, I would think they want to get through ठीक है this वही with दो investing रिवील as है little जितने as यूटिल यूज possible. किए हाँ वो भी बात है Ideal. And just stack up your ults and just go for broke on the last मैं round. समझा नहीं वो ऊपर क्यों देख रहा है शॉट के लिए Obviously, you got to win this one first, though. पता नहीं किसने लिखा था सिर्फ पहनने के लिए या क्या है You mentioned how much an attack side off would slow अगर down आपका the rounds. participate हो Great. It feels like they've been pretty slow as it is. क्योंकि हमारे तो हमारा हो नहीं रहा full display here. हमारे लिंक ही नहीं No one is. Even backside of it, Trent is just jiggling her after. No one's there though, but 30 seconds left. Well, they all invested. Double lurk in mid. The KJ turns down. This is अरे critical. They managed to slip the net. Net's gonna fall. नाइस पे There's a late flank out from Bound, but it's देखा just नेचर not को ये enough. मैंने से कहा है अभी जो कॉल Leaf with 60 अच्छा HP, trying to get some high ground. Jonah P down low. नहीं Split target to नाइस look at. Does not अरे gosh. Still managing to find value. जीतेंगे वो देखो उसका ट्रैप देख लो He's so good. Trent has managed to upgrade a weapon. See Dizzy go up top. दोनों Jogma, गए nice bit of वापस। HP. With the op in hand, it's all on to Leaf now. Time short, weaponry not great. Is nothing. The tap a threat. आप सेव करने दे रहा क्या उसे Derek potentially. Nice. अल्टा क्या Close the round. अल्टा It देंगे wasn't ना as clean as we thought it could be, and the op is not on the field, but I do believe कितने में APOC will have enough दो में money to get an और प्लेगा प्लांट कर देगा आ जाएगी It looks like they're opting not to. Oh, it looks like no. Yeah, you're right. They Across the won't. board. दो अल्टा केजे के एल्ट भी है I would not be surprised here if they take early control B. Give Superman ये an orb. Give डायरेक्ट की बोल रहा हूँ डायरेक्ट की बोल रहा हूँ ना with the kick. डायरेक्ट की बोल रहा हूँ उसकी फिश है उस पे फिश है भाई गैकोल्टी वही बोल रहे हैं तो और तो लेंगे ना क्या बात कर रहे हैं अरे वो आई एग्री और लेंगे पर तू कह रहा है ना अल्ट मार कर आ जाए अल्ट प्लांट मतलब बॉम्ब प्लांट करके आ जाएगी तो बट मार- लोग उस तरह से यूज ही नहीं करते उसका कभी अरे वो ड्रोन जैसे यूज कर रहा है उसका हाँ तो आप प्लांट उससे करवाएंगे अराउंड भाई that you can use 2 times This round. So much money. But they're gonna dry swing right into Leaf, I think. मिड कंट्रोल कर सकते थे वो अराउंड पर ये भी प्ले बढ़िया था उन्होंने मिड कंट्रोल लिया एक्चुअली वो काम करा वो केओ के अल्टी पे मिड कंट्रोल कुछ भी नहीं है यार ये Second time that Dizzy. अरे फ्लैश बहुत है बाबा Oh. The jump spot is perfect. Jogma couldn't kill him. अरे जॉगिंग क्यों Yeah, you're right. That was gross. That could have been round over right there. Oh. Well, look at APOC already working the A side of the map. येलो खा ले Superman. Apologies. उसके टीममेट नहीं कर दिया वो That's my स्मोक boy. वाओ We're cool like that. We've seen this approach before. A little उसको bit of angle noise may देने के be. लिए। APOC takes space A. मुझे It really opens up the map on the attack side. वो यूटिल वगैरह I डालने don't के think लिए they देखा हाँ want ए पे उन्हें रीड है ए पे ही होगा देख 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 केजे अल्टी लगेगी एक खुल जाएगा और ले लेगा वो और प्ले उसने और प्ले लिया आई थिंक ऑलरेडी ना नहीं लिया तो अब ले लेगा Should give them the sight. और देख बॉम्ब दे दिया उसको देख बॉम्ब दे दिया उसको Doug, we've seen how deadly this comp can be on post plant. बोल रहा भाई उसका अल्टी कराएंगे हम Here लोग comes the delay. But is it going to be enough to नहीं land? कर रहा बट He's so up. डिफिकल्टी आ रही है He's so aggressive. Such a huge kill. It's 1 for 1. 13 seconds left. ये ले आगे अल्टी आ गई Spike finally scooped up, and it seems like it's going to get planted without any further disturbance. Superman one off ult. Ned on the flank. Ult not finding anything. They put the sensor down though. Jogamo needs to go for an early भाई पीछे बंदा आ गया फ्लैंक आ गया Flank if they want to pull it off. Superman not able to land the shots onto Trent. Lee falls back by Bro. नहीं मर गया There's the pit. Oh my gosh. Can Valor नहीं There it is. Ned on the flank. Superman left alone. 2 mollies.
trying to find comfort. 2 mollies and it lands perfectly. In the pit, 7 bullets. Is it going to be enough? They're in a blender. He gets Nice, Fallon weak. Oh, no, it's going to happen. The Red Bull clutch for EG. And they're headed to playoffs. जीत गए नाइस भाई मैंने तो बोला था ये जीत गई What a play. He's so clutch. He's so clutch, Doug. Look at him, 22, 15, and 12. An outrageous performance. We're going to take a look at that one more time because we can talk That's about okay, Superman, but man, much like Sunset, a team effort. Apoth aggressive, Jogamo doing Jogamo things on the deadlock, and then Superman dancing around the pit here like this, using his spits perfectly. Put him in a blender. He put him in a blender. And what a showing from this EG squad. And I think with this series, there may still be some doubters, but they've been put on notice. This EG squad, yeah, it may be new, but it's not like they're anywhere. They haven't taken a step back. These guys are here to play. And that was hard fought. Yeah. Starting the entire series down 0-7. Bringing it back and winning the map in double OT. I mean, we've seen resilience, we've seen fundamentals, clutchness. बेचता हूँ मैं आउटप्लेस किडनी बेचता हूँ देता हूँ कैप्सूल टेंशन मत लो चलो भाई गुड नाइट गाइस बाय हैं जो नहीं आई वही बोल रहा हूँ बस कि जिस मतलब जिस ना जिस क्वालिटी की किडनी है सिर्फ कैप्सूल ही खा ही सकते हैं उससे क्या बोल रहे किडनी के साथ 2-3 पत्थर फ्री आ रहे हैं that they had cooked up on Icebox. What a win. A great showing from G2 as well, man. Yeah, they look They're good. not an बढ़िया easy खेला team to beat. No. मुझे क्यों लग रहा है ये टीम भी पॉटर ने ही उठाई है won the series as well. तो वही उठाएगी और कौन उठाएगा Couple of rounds. उठाएगा तो कौन उठाएगा ऐसा ओनर थोड़ी ना हां कोच ही तो करेगा स्काउट कोच करना है बैठ के गॉड स्पीड ने भी तो अपने अराउंड ही टीम बनाई है वो पहले बनती है कोच बाद में आता है भाई एनालिस्ट भी उठाते हैं अरे नहीं भाई पर अरे हाँ जब सुनना कोच नहीं है तब ना बट जब कोच है हाँ ऑलरेडी पिछला वो जीती है हाँ उसको क्यों नहीं देंगे वो लोग हाँ अपने हिसाब से टीम बनाने उसको पता है कि कैसे करना है उसको To keep it competitive, to stay in the fight, but ultimately it was the preparation, it was the rookies stepping up on the stage for the very first भाई time. जोगेमो का इंटरव्यू सुनेंगे फिर बन करेंगे Even if you're aware of what the other team is going to run, like there's a Good lot of night. rumors that go around the scene, right? Oh, this guy might win, this guy might win that. But when you're actually in the server, आपका इंटरव्यू देना आपका बायो स्टेज पे soon with the official captain side jersey soon Yeah. 2030 So many layers. soon The attack side was a little bit closer and perhaps a little bit more uncomfortable, but they look drilled, they look prepared, and they're busting out something fun. And again, I think Deadlock believers rejoice. There's a lot to be excited. क्या चाहिए मेरी जर्सी ये देख कहाँ है स्क्रीन पे ये देख कोई भी जर्सी पूछेगा तो मैं ऐसे दिखाऊंगा भाई उल्टा घूम के कहाँ है स्ट्रीम पे आना पड़ेगा अबे एक बार आना ये रघु आइयो करियो देखियो स्ट्रीम देखियो वेलकम की जल्दी दिखा वेलकम की स्ट्रीम दिखा मुझे फटाफट से तू आ जल्दी 1 मिनट आए डिस्कॉर्ड से ही आ जाना सीधा अरे मेरा कैप्चर ऑन है ना तू डिस्प्ले कैप्चर कर रहा है क्या नहीं मैं विंडो कैप्चर कर रहा हूँ इसके लिए हां तो विंडो कैप्चर है तो साले आ गया हाँ अच्छा कुर्सी पे टांग रखी है कुर्सी भी टांग रखे भाई कुर्सी भी टांग रखी है बताते हाँ कुर्सी पे टांगे तो बता दे भाई जो बोला था जो साइज बोली थी अच्छा। मैंने उससे एक छोटी साइज लाया है मैं जैसे नंबर पढ़ा ऊपर साइज का stayed with EG into this year. अभी मैंने This ट्राई is the किया debut with the new team. How did the two of you approach this season having to do this huge rebuild? So we approached the season knowing that like we have nothing to lose. Like people already praying our downfall. You know, this is another year for EG getting the downfall. But hey, like me and Potter knew that whatever team we can pull together, we'll make it work. Like that's as simple as that. Sure, I mean, world champion duo. Can't dispute that. One thing that was so standout to me was that on the player cams when we were getting some of the voice comms, there was so much hype with you guys. Like the excitement was there the whole time, which kind of reminds me of last year when you guys had Booster and everybody going crazy too. Like, what's the difference in the communication and what's been the same with this team compared to last year? Yeah, so we have a couple of bot people. We have Superman, we have me and Derek, and you know.
we all just always watch each other's back and we make sure that we hype each other up because that's the, you know, when we're having fun, it's just another game, you know? That's it. Yeah, absolutely. And this is coming into now your second year with EG. In what ways do you think most significantly you've grown as a player throughout all this time? Starting last year, your first game was a loss till winning champions, now debuting with a win. What's the growth been like for you? Yeah, the growth is definitely just building the confidence. It took me a little bit for that first Zappa year. आ गया पीछे भाई, Zappa आ गया पीछे. The whole like Americas, but then halfway through, you know, we had the like Demon One set us up, and from there, it's just like been a spark for all of us. I think from the old core as well. 100%. I mean, you can't start the year any better than this with a win. What's the key to continuing this मैं Demon One का नाम for the लिया rest उसने. of the year, for the rest of Kickoff? PHP मेरी We're just कितनी gonna play की confident as जरूरत we नहीं can है. because like you guys can see the shooters on our team now. So yeah. Yeah, absolutely. Guys, can we make some noise for Jajima one more time? We're going to send this off to a break. We're gonna Hello, be back Shabazz. in the post-match with Potter for a bit of an Hello, Shabazz, क्या हाल है? some of the members of the desk. Don't go anywhere. चलो guys, हो गया खत्म. चलो भाई, हो गया आज का मेरे को Watchparty. medley भी बना दिया है फिर. अच्छा. हो जाए. मेरे को और के थ्रू मिला है Watchparty. शबाज पूछ रहा है Watchparty कैसे मिला. कल वॉलनट भी पूछने आया था. और के थ्रू जिस ऑर्ग में मैं अभी हूँ खेल रहा हूँ उसके थ्रू मिला मुझे Watchparty. तुझे चाहिए हो तो भाई स्ट्रीम करो और क्या बोलूँ मैं. क्या हाँ 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 सीधे स्ट्रीम करेगा तो स्ट्राइक पड़ेगा भाई सीधे. कोई और अगर मत करेगा बिना राइट्स के तो अलाउंस कैसे होगा. मे बी पता नहीं, कुछ होगा भाई जुगाड़ बुगाड़ करके. कि कैसे स्ट्रीम करे वो पूछ रहा है अगर करनी है उसका Watchparty का. हाँ हमें पता ही नहीं है क्योंकि नहीं पढ़ा है पर मेरे को तो और के थ्रू मिला है ना. अब उन्हें कैसे मिला है वो मुझे क्या है. अच्छा ठीक है. हाँ यस 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 डिस्क्लोज. हाँ ठीक यस. अबे अब हो गए जितने स्लॉट्स थे हमारे पास Watchparty के. आई थिंक 3 ही स्लॉट मिले थे शायद. हाँ हाँ दिखा है वेलकम क्या दिखा रहा है. आ गया मैं स्ट्रीम पे. नंबर ऑफ स्लॉट्स ही मिलते हैं ना सब और को. जैसे AR को भी 3-4 मिले हैं. कितने मिले हैं पता नहीं. हाँ अब तो हो गया. अब तो खत्म भी. अब तो भाई प्लेऑफ चालू होने वाले हैं. हाँ हाँ मतलब ऑलमोस्ट अब तो हाफ में देर है हम. देख रहा हूँ. हाँ भाई 20-18 भाई. अरे वो तो मेरे को बता दिया था उसने बता दिया था मुझे. क्या नाम है उसका. मॉन्स्टर ने बता दिया था मुझे तो ये वाला तो. हाँ हाँ
हाँ 20-18 टाइम भाई। 6 भाई, 6 फर्स्ट ब्लड, होली शिट भाई। हाँ ना, इजी जीत गए नेक्स्ट भाई, गुड मॉर्निंग भाई। हाँ हाँ चलो बाय बाय। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग भाई। अब तो हम जा रहे हैं, ईद जीत गए मैच। अब मिलेंगे हम कल। कल, यस। बाय बाय गाइस, पीस आउट, आउट द पीस। कल मिलेंगे, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। होपफुली कल भी और बंदे आए वॉच पार्टी में। अरे जो टाइमिंग है ना रात वाली भाई, बेटी है ये, पर कोई दिक्कत नहीं। अभी मीम आने वाला है क्लासिक और स्नेक बड़ी भाई, वीके ने पहले नोटिस कर लिया था वो तो। बाय गाइस, गुड नाइट, मतलब गुड मॉर्निंग। पीस आउट, आउट द पीस। बाय बाय। Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time.